Uh, Sorry for 1 hour delay. Actually, in his start from around 11 to 11:15, that was no doubt problem from our side. But from 11:15 to 12, that was some technical problem from the Shawanlal sir. So we got the commitment that he will join us after all the sessions in last, we can say. After around 4:30, he will join with us again. So don't worry, हमारा वो सेशन भी मिस नहीं होने वाला है. We'll connect him. Now we have with us Dr. Lal Singh sir. So first offline will proceed. Then Pawan Shahane sir is also, I think, he will join just after 1 hour. So we'll proceed for the second session. Okay, sir, Ramanki sir. A very good afternoon to our today's guest, Dr. Lal Singh sir, Principal sir, and all the dear participants. I, Dr. Ramankit Jaiswal, Assistant Professor at KC Bajaj College of Pharmacy and Research, Nagpur. It's my privilege to host the session. Now I request our Principal sir to felicitate Dr. Lal Singh sir by offering a bouquet. Let's start our session of second day of Faculty Development Program. Session will be conducted by Dr. Lal Singh sir. Dr. Lal Singh is a principal scientist at NIRI, CSIR of Government of India, a specialist in ecological restoration and has worked extensively on projects related to the development of bamboo diversity on fly ash as degraded areas, wastelands, mining, dump and contaminated areas. Also worked on projects related to phytoremediation technology using bamboo species for industrial waste, ecological restoration of uranium tailings, and economic valuation of natural and man-made ecosystem and biodiversity. Made a significant contribution to the development of sustainable practices for the management of degraded ecosystem. Sir has done his PhD from Forest Ecology from Forest Research Institute, University, Dehradun, India. Presently, he is working on several central and state research projects as group leader of more than 3 crores. Sir has published their research work in more than 15 high-impact journals. Sir has also published a book and is author of more than 5 book chapters. Sir has also 5 conference published papers. Sir has received honors and awards from Bamboo Society of India for fundamental contribution in bamboo sector. Junior Best Scientist Award in NIRI from CSIR. Best Presentation Award from Forest Research Institute. Sir is also a member of Vigyan Bharati Bamboo Society of India and Indian Science Congress. So I request Dr. Lal Singh sir to proceed for the session. Please sir. So thank you all of you for giving this opportunity. Okay. So I think मेरी आवाज़ इतनी भारी है कि माइक की शायद ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हम लोग काफ़ी पास हैं, नज़दीक हैं. ओके, सो वी विल डिस्कस टुडे दी साइंटिफिक राइटिंग इन हाई इम्पैक्ट जर्नल्स. तो आपको बी फार्मा या डिप्लोमा कोर्स करने के बाद भी आपको पेपर तो लिखना ही पड़ेगा, और अगर आपको साइंटिस्ट बनना है इसी फील्ड में और आगे रिसर्च करनी है बच्चों, और सभी को तो पेपर इम्पॉर्टेंट है. इफ़ यू वांट टू बिकम ए साइंटिस्ट, इफ़ यू वांट बिकम ए इन दी हेल्थ केयर, इफ़ यू वांट टू बिकम इन दी टॉप लेवल जॉब इन दी हेल्थ केयर, देन यू हैव टू डू रिसर्च. और रिसर्च करने के लिए आपको वॉट एवर यू आर डूइंग इट शुड बी प्रूव थ्रू दी जर्नल्स. सो वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट दी कि what type of, in which type of journal we can publish the research, what type of research we can publish, everything we will discuss, and what type of research we are doing, that part also we will discuss. Okay, so now we will discuss about the what type of research we are doing. ये चेंज कैसे होंगे स्लाइड्स या कुछ है या यहीं से ही हैं? हाँ, मैं कर देता हूँ. So basically
हमारा जो देश है उसमें 2.4% लैंड एरिया है। मैं बड़ी सिंपल धीरे धीरे करके बोलूँगा जिससे आपको समझ आ जाए। 2.4% मीन्स 329 मिलियन हेक्टेयर। कितना? 329 मिलियन हेक्टेयर हमारे देश में, पूरे देश में लैंड है, जो ज़मीन है। अब उसमें अगर हम अपने महाराष्ट्र के बारे में बात करें तो हमारे महाराष्ट्र में, माझे महाराष्ट्र में 30.77 मिलियन हेक्टेयर है। 1 मिलियन हेक्टेयर में 10 लाख हेक्टेयर होते हैं। 1 मिलियन हेक्टेयर में 10 लाख हेक्टेयर होते हैं। तो ये जो अब हम अगर महाराष्ट्र की बात करें तो 30.77 मिलियन हेक्टेयर्स में भी ज़मीन ऐसी है 12 मिलियन या इससे ज़्यादा 12 मिलियन हेक्टेयर जो डिग्रेडेड है, जो जिसमें कटाव हो जाता है। जैसे बरसात के दिनों में थोड़ी थोड़ी मिट्टी धुल करके आती है और लो लाइंग एरियाज़ में चली जाती है, जिससे किसानों को बड़ी तकलीफ होती है कि उनके खेत की मिट्टी, उपजाऊ जो मिट्टी होती है वो नीचे के एरिया में चली जाती है। और हमारे महाराष्ट्र में मिट्टी की बहुत कमी है, पत्थर, ग्रेबल्स, पेबल्स, और जब हम जो पानी देते हैं उससे भी छोटे छोटे वाइट कलर के पत्थर बन जाते हैं नहीं। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। तो इस तरीके की जो हमारी ज़मीन है, जो डिग्रेडेड ज़मीन है, उस ज़मीन को कैसे उपजाऊ बनाया जाए, मेडिसिनल पौधे लगा करके, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री डेवलप करके, उस तरीके की टेक्निक्स एंड टूल्स और टेक्नोलॉजी पे हम लोगों ने रिसर्च की है। ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हो कि कोई भी फॉर्मुलेशंस है किसी भी मेडिसिन्स का, वो प्लांट उसका बेस है। क्या बेस है? प्लांट्स। बगैर प्लांट्स के नहीं बनाया जा सकता। एलोपैथिक तो, आयुर्वेदिक तो और होम्योपैथिक तो, ऐसी कोई सी मेडिसिन नहीं है जो प्लांट बेस्ड है। दूसरी एनिमल बेस्ड होती है। इसीलिए एक पर ग्रीन मार्क रहता है, एक पर रेड मार्क होता है कि ये इसका बेस एनिमल है या प्लांट है, रहता है ना। तो अब मैं आपसे एक चीज़ पूछूंगा इसमें कि जो कैप्सूल होता है, जो मेडिसिन का जो कैप्सूल होता है, दवा का जो कैप्सूल की कवरिंग होती है उसकी, वो किससे बनती है? हैं? हाँ, ये आपने बता दिया क्योंकि आप तो एक्सपर्ट हो इस चीज़ के। तो ये बनाई कैसे जाता है वो कैप्सूल? वो भी एक वन ऑफ दी नहीं एनिमल से बना है, प्लांट से भी। जो मिल्क का पहले छाछ बनती है, मट्ठा, और मट्ठा को भी उसको फाड़ लेते हैं, फाड़ करके जो उसका वो बनता है, केसिन नामक प्रोटीन निकलती है। और ये हमारे देश में भिंड, मुरैना, एक मध्य प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन डिस्ट्रिक्ट्स में यही काम किया जाता है। तो जो छाछ है उसको थोड़ा उबालते हैं तो वो फट जाता है, और उसका जो पार्ट है वो केसिन नामक प्रोटीन्स होती है, उससे भी उसके कैप्सूल के कवर बनाए जाते हैं। इट इज़ ए टाइप ऑफ दी प्रोटीन। जब भी हम खाते हैं तो अंदर ईजिली वो सबसे पहले वो डिजॉल्व हो जाता है। ओके। तो हमारे देश में अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कितने तरह के पेड़ हैं पूरे? तो देखो 18,700 तरह के पेड़ हैं। कितने हैं? 18,700 तरह के पेड़ हैं जो हमारे पूरे देश में फैले हुए हैं। अब जैसे पेड़ों में भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। कुछ पेड़ होते हैं जिनको ट्री बोलते हैं, जो 5 मीटर की हाइट से ऊपर होते हैं, उनको पेड़ बोलते हैं। ये लगभग हमारे देश में 2200 तरह के हैं जो प्राकृतिक जंगलों में हैं। ऑर्नामेंटल पेड़ों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो प्राकृतिक जंगलों में, हमारे प्राकृतिक जंगलों में पाए जाते हैं, 2200 तरह के पेड़ हैं। और जो झाड़ियाँ हैं, 1 मीटर से लेकर के 5 मीटर के बीच की झाड़ियाँ जिनको हम कहते हैं, वो भी इतनी आई 2200 से 2300 तरह की। और उसके बाद में 14,000 तरह के क्या हैं, छोटे पौधे रहते हैं, जैसे घास हो गए, से मोथा हो गए, सेज जिसको बोलते हैं। ये कितने तरह के हैं? 14,000 तरह के। तो देखो 2200 तरह के पेड़, 2200 तरह की झाड़ियाँ और 14,000 तरह के छोटे छोटे पौधे। तो इस तरीके से टोटल कितने तरह के हैं? 14,700 तरह के। अब मैं आपसे पूछूंगा, अभी आपने दंत कांति कौन कौन ही इस्तेमाल करता है? दंत कांति जो पेस्ट है, कोई भी नहीं। दंत कांति पेस्ट कोई आप इस्तेमाल करते हो? प्रीवियसली सिर्फ 7 प्लांट्स हैं उसमें, पहले 9 रहते थे, अब सिर्फ 7 प्लांट्स का फॉर्मुलेशन है। तो किसी चीज़ को बनाने के लिए फॉर्मुलेशन इम्पॉर्टेंट है।
फॉर्मुलेशन इंपॉर्टेंट है। आपने एक फॉर्मुलेशन डेवलप कर दिया, इट मीन्स यू हैव डेवलप द पेटेंट, इट मीन्स यू हैव डेवलप द रिसर्च, इट मीन्स यू हैव डेवलप्ड योर करियर। क्या इंपॉर्टेंट है? फॉर्मुलेशंस। तो एवरी रिसोर्स वी हैव, एवरीथिंग वी नो, but we don't know the formulation, which types of formulations is required, only which types of the formulation is important for our body as per the requirement. After that we have to decide the market is also important parameters, but first formulation is important. तो कितने तरीके के पेड़ हैं, पेड़ पौधे हैं? 18,700 तरह के पेड़ पौधे हैं, जिसमें से 2200 तरह के भैया पेड़ हैं, और 2200 से 2300 तरह की झाड़ियां हैं, और 14,000 तरह के लगभग छोटे छोटे वो हैं, घास हो गए, छोटे छोटे और मेडिसिनल पौधे हो गए, जिसमें से 6000 लगभग 6600 तरह के मेडिसिनल प्लांट हैं। इतने मेडिसिनल प्लांट हैं जिससे डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मुलेशन, जैसे दंत कांति भी एक फॉर्मुलेशन है। एक आपने मिसवाक नाम सुना होगा, ये डाबर कंपनी बनाती है, ये भी एक फॉर्मुलेशन है। ये 2 पौधे होते हैं, साल्वेडोरा ओलियोडिस, एक साल्वेडोरा पर्सिका, इन 2 प्लांट्स के फॉर्मुलेशन से ये मिसवाक जो है पेस्ट बना जाता है। यानी मोर देन 80% वो दोनों प्लांट्स रहते हैं, उससे पेस्ट बनाया जाता है। तो फॉर्मुलेशन इज इम्पॉर्टेंट, फॉर्मुलेशन इज इम्पॉर्टेंट। तो अब बात आती है, जैसे हमें पता है इतनी तरह की डाइवर्सिटी है, इसमें से मेडिसिनल प्लांट ये हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो हमारे कहते हैं ना घरगुती, घरों में जो डिस्कस किया जाता है कि भाई ये इतना ये डाल लो, इतना ये डाल लो, उसके बाद में जैसे आपने देखा होगा हमारे घरों में जो खाना बनता है उसके फॉर्मुलेशंस आप किसी से नहीं पूछने जाते, आप अंदाजे से डालते हो, सब कुछ बिल्कुल फिट बनता है, और बाद में जो भी वेजिटेबल जो बनाते हो बिल्कुल फिट बैठती है। आप ये सोचो, जब हम वो चीज़ बना सकते हैं, सब्जी बेस्ट बना सकते हैं, बेस्ट एग्जाम्पल पेश कर सकते हैं, तो ये फॉर्मुलेशंस हम क्यों नहीं बना सकते? यस, वी कैन डू। और उस फॉर्मुलेशंस के बेसिस पे ही वो हम एज ए जब पब्लिश करेंगे कहीं भी, किसी भी नेशनल इंटरनेशनल जर्नल्स में या किसी बुक्स में, दैट इज़ द पब्लिकेशंस। तो हम में से ही कुछ लोग ऐसे होंगे, देखो सिंपल चीज़ें, साइंस को सिंपल तरीके से समझना है। हम जितना सिंपल अपनी साइंस को कर सकते हैं, दैट मीन्स वी कैन डू बेस्ट, वी कैन डू बेस्ट, because we are Indian, we have the best survivability, best adaptation rate, everything best in the entire world. तो हम we can do everything। कोई अपने आप को कम आंकने की कोशिश मत करना। बीइंग एज ए साइंटिस्ट मैं कह रहा हूँ, मैं एक गाँव से आया हूँ, ऐसे गाँव से जिसका रास्ता भी ठीक नहीं है। देखो मैं नीरी में और बहुत सीनियर साइंटिस्ट हूँ, प्रिंसिपल साइंटिस्ट हूँ, 8 PhD अवार्ड करवा दी, बहुत सारे पब्लिकेशंस हैं, और बहुत सारा रेस्पेक्ट है सोसाइटी में। तो मैं एक किसका हूँ, मजदूर का बेटा, गरीब किसान का बेटा, और मैं यहाँ तक पहुँच गया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप मुझसे आगे जा सकते हो, बस आपको अपना पढ़ना है, आपको जो टारगेट मिला हुआ है वही आपका टारगेट, उसको अचीव करना है, उस टारगेट में पीछे नहीं रहना। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है? जो आपको टारगेट मिला हुआ है उसमें आपको किसी भी लेवल पे पीएच ना। नाउ वी विल डिस्कस द रिसर्च। जो 18,700 तरह के पेड़ पौधे हैं, जिसमें 6,600 तरह के मेडिसिनल प्लांट हैं, जस्ट टू इमेजिन, उनमें से जैसे डाबर हो गया, ये पतंजलि आयुर्वेद हो गए। आजकल आयुर्वेद का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत बड़ा मेजर रोल है या नहीं है? तो और इसकी बहुत बड़ी इकोनॉमी है आयुर्वेद की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, इसीलिए दैट इज इम्पॉर्टेंट पार्ट। और दीज आर दी नेचुरल ईजिली अवेलेबल रिसोर्स, प्लांट नेचुरली अवेलेबल रिसोर्स। अब जैसा कि अब हम डिस्कस करते हैं, CSIR नीरी ने एक छोटी सी टेक्नोलॉजी डेवलप करी थी, इसका नाम है ERT, इको रिजुविनेशन टेक्नोलॉजी। बेसिकली इसमें 6 फॉर्मुलेशंस हैं। देखो जैसे आप सब्जी बनाते हो, जैसे मेरे घर में मेरी माँ सब्जी बनाती है तो मैं बड़े गौर से देखता हूँ उन्होंने क्या क्या कैसे कैसे डाला। जब मैं अकेला रहूँगा तो इसी ऐसे ही तरह से डाल करके मैं भी बना लूँगा, तो फिर भी मुझ पर वो चीज़ नहीं बन पाती, बिकॉज सी इज़ डूइंग लास्ट 30 to 40 to 50 years, सी इज़ एक्सपर्ट इन दिस फील्ड, वी कान डू। सो
दैट फॉर्मुलेशंस एंड लर्निंग एंड प्रैक्टिस इज रियली इम्पॉर्टेंट। तो CSIR नीरी ने और काम किया, हमने भी काम किया, और एक टीम ने काम किया। टीम मीन्स क्या होता है? टीम को हिंदी में क्या कहते हैं? एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। टीम मीन्स एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। और T फॉर टोटल, E फॉर एफर्ट, A फॉर ऑल, M फॉर मेंबर। टोटल एफर्ट ऑफ ऑल मेंबर, टोटल एफर्ट ऑफ ऑल मेंबर। जब हम एक टीम में काम करते हैं तो एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होती है, तो उसको जब एक उंगली कहीं लगाएंगे और जब 5 उंगली मिला करके लगाएंगे तो दैट फोर्स विल बी मोर। सो ये एक टीम वर्क है, इस टीम ने काम किया। ये टेक्नोलॉजी, इसमें सिंपल चीज़ें हैं। देखो प्लांट है, किसी चीज़ के पैरामीटर्स हैं, और पैरामीटर इन सबको मिला करके फंजाई और बैक्टीरिया हैं। अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमारा जो स्टमक होता है उसमें कितने बैक्टीरिया और कितने फंजाई हैं, कोई बता सकता है? बहुत इम्पोर्टेंट रिसर्च है। देखो हमारा जो स्टमक है, मैं सुबह मैंने गाजर भी खाई, मूली भी खाई, पराठा भी खा लिया, यहाँ चाय भी मिल गई वो भी दबा दी, ब्रेकफास्ट मिला वो भी खा लिया, तो एवरीथिंग आई एम ईटिंग। लेकिन आपने देखो एक तरफ मैं यूरिन निकालता हूँ, इट मीन्स खट्टा, एक तरफ एक्सक्रीटा निकालता हूँ, इट मीन्स मीठा। दीज आर द 2 पार्ट्स। इन 2 पार्ट को सेपरेट कौन करता है? बैक्टीरिया। जो हमारे गट में, जो ह्यूमन गट में जो बैक्टीरिया होते हैं, इन पार्ट को दोनों वो सेपरेट कर देते हैं। तो दिस इज दी वर्ल्ड्स बेस्ट मशीन। अगर ये सारे बैक्टीरिया और ये फंजाई आइडेंटिफाई हो गए तो क्या प्लास्टिक का पेट नहीं हो सकता? हो सकता है ना। तो इस पे ही रिसर्च बची हुई है। किस पे बची हुई है? इसी पे। अगर सपोज जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग पराठी लगाते हैं, जो गांव के लोग हैं, जो किसान के, कोई तो एक दो तो किसान के होंगे ही, गांव में जो पराठी बोते हैं तो वो 1 एकड़ में सपोज 10 टन हो गई फॉर एग्जांपल। वैसे 10 टन बड़ी मुश्किल से होती है, तो 1 एकड़ में अगर 10 टन पराठी निकलती है, तो अगर हर किसान का बेटा चाहता है क्यों ना मेरे खेत में 20 एकड़ निकले। तो हम अपने जब स्टमक की बात करते हैं, प्लांट्स में किस चीज़ की बात करनी चाहिए? देखो हमने अपने स्टमक की बात करी, हम अच्छे से अच्छा खाने की कोशिश करते हैं। अब मैं सड़ा हुआ नाश्ता अगर आपको खिलाऊं तो खाओगे नहीं, किसी भी कीमत पे नहीं खाओगे ना। तो हम प्लांट में किस चीज़ की बात करनी चाहिए? उसकी जड़ों की। जड़ें क्या हैं उसकी? स्टमक। प्लांट्स में रूट्स क्या होती हैं उसके? स्टमक। देखो मेरा 20 साल का रिसर्च का तजुर्बा है, मैं कुछ सिखाने आया हूँ आपको अच्छी चीज़ें, और रिसर्च में कैसे रिसर्च की जाती है, कैसे पेपर्स लिखे जाते हैं, दैट इज इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो ये जो राइजोस्फीयर्स है, क्या है प्लांट का? स्टमक। राइजो माने होता है रूट्स, स्फीयर माने उसके चारों तरफ का। अगर और जो पत्तियां क्या बनाती हैं ये आपको बताना पड़ेगा। हरे रंग की पत्ती होती हैं, वो क्या बनाती हैं? क्लोरोफिल तो पत्तियों में होता है, ग्रीन कलर है, क्लोरोफिल पत्तियों में होता है। वो क्लोरोफिल क्या काम करता है? सिंथेसिस करता है ना। क्या वर्ड है? फोटो माने लाइट, सिंथेसिस माने बनाना, यानी लाइट की प्रेजेंस में कुछ न कुछ बना रहा है। क्या बना रहा है? ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? मीठा। ग्लूकोज में क्या होता है? C और H। पक्का? इसका मतलब पत्तियां मीठा बनाती है। ये एम आई क्लियर? साइंस को सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करो। लीफ क्या बनाती है? मीठा। C और H बनाती है। फोटोलाइट की प्रेजेंस में लीफ ने मीठा बनाया, और क्या रिलीज करती है? ऑक्सीजन रिलीज करती है। और क्या लेती है? CO2 लेती है। देखो CO2 में C वहां से ले लिया उसने, O2 रिलीज कर दिया, और एक चीज और लेती है बच्चों, ध्यान नहीं कर रहे आप, पानी। पानी में से H लेती है, तो पानी में से H ले लिया, और CO2 में से C ले लिया, और C और H। ग्लूकोज C और H तो होता है। ग्लूकोज क्या फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का? C6H12O6, तो यही तो होता है। तो C और H लेकर के जब फूड बन गया, फूड मीन्स मीठा बन गया, तो 2 टिश्यू होते हैं प्लांट्स में, एक फिलोएम होता है, एक जाइलम होता है। फिलोएम ऊपर से लेकर के आता है और जाइलम नीचे से लेकर के जाता है। फिलोएम और जाइलम। तो मीठा जब बन गया तो पत्ती ने मीठा बनाया,
और मीठा कहाँ गया बन करके? नीचे। कौन लेकर के गया? कौन लेकर के गया? फ्लोएम। और नीचे उसने नीचे मीठा छोड़ दिया। नीचे उनकी जड़ों में कौन है? कौन है बच्चों? उनकी जड़ों में सूक्ष्म जीव होते हैं जिन्हें हम बैक्टीरिया और फंजाई कहते हैं। अगर बैक्टीरिया और फंजाई, माइक्रोबियल इकोलॉजी उसको कहेंगे, माइक्रोबियल इकोलॉजी। जैसे हमारे पेट में, जैसे मेरा 90 किलोग्राम वेट है, 4 किलो बैक्टीरिया हैं बाबा मेरे पेट में, अब मैं उनको लेके चलता हूँ, खूब मोटा पेट है देखो, तो उनको लेकर के हमेशा मैं चलता रहे। मुझे भूख नहीं लगती, उनको भूख लगती है। बच्चों बहुत सिंपल चीज़ें, साइंस को समझो, मैं बहुत अच्छी चीज़ सिखा रहा हूँ। हमें भूख नहीं लगती, जैसे ही उनको भूख लगेगी ना, पेट में चूहे से कूदेंगे, होता है ना, उनको भूख लगती है, हमको भूख नहीं लगती, क्योंकि वो काम करते हैं। जैसे हमने खाना जो खाया उसको क्या काम करते हैं? वो तोड़ने का। और जब तोड़ते हैं तो वो जितना हमारी बॉडी को खट्टा चाहिए, खट्टा मीन्स मिनरल, खट्टा मीन्स मिनरल, मिनरल में कौन कौन से? जितने भर जिसमें सी नहीं है, जिसमें सी नहीं है वो मिनरल है। सी माने कार्बन, जिसमें बच्चों सी नहीं है, कार्बन नहीं है, वो सब मिनरल है। जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, फास्फोरस हो गया, जितने बार ये हैं सब मिनरल्स में आ गए। सब चीज़, मैग्नीशियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन, ये सब क्या आ गए? खट्टा। ये सारे खट्टे होते हैं टेस्ट में, तो ये मिनरल्स हो गए। और मीठा क्या होता है? सी और एच, सी और एच। पत्ती ने मीठा बनाया, नीचे जड़ों में मीठा गया, और उस मीठे को किसने खाया? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनकी बैक्टीरिया। और हमारे मीठे को हम जो हम खाते हैं उसमें से कौन खाता है? हमारे अंदर जो बैक्टीरिया हैं वो खा जाते हैं, उसको खा जाते हैं ना। और जो डाइजेस्ट नहीं होता वो एक्सक्रीटा के फॉर्म में नीचे निकाल देते हैं। और बॉडी मिनरल्स को लेती है, जो मिनरल्स हमारी बॉडी जिसको नहीं ले पाती, और उनको यूरिन के फॉर्म में बाहर बाहर निकाल देती है। जितनी बॉडी को ज़रूरत होती है उतनी बॉडी लेती है, बाद बाकी एक्सक्रीटा के फॉर्म में अनडाइजेस्टेड पार्ट को बाहर निकालती है। ना कितनी गजब की साइंस! हम इतनी दुनिया की, विश्व की बेस्ट साइंस लेकर के घूमते हैं अपने शरीर को। इससे बड़ा इनकी सुपर कंप्यूटर भी काम नहीं कर सकता जो हमारा बॉडी, हमारा शरीर काम करता है या नहीं? तो अभी देखो, आप ही ने बताया कि मीठे को लेकर के फ्लोएम गया, उसने नीचे छोड़ दिया, किसमें? जड़ों में। और वो मीठा किसने खाया? माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। जब मीठा खाते हैं वो, तो वो मिट्टी में छोड़ता है, मिट्टी में जड़ें रहती हैं, रूट एक्जिड्यूट्स रहते हैं, रूट एक्जिड्यूट्स के थ्रू वो सॉइल के अंदर जाते हैं, और उस सॉइल को बैक्टीरिया और फंजाई खा जाते हैं। जब खाते हैं तो वो उसको भी वो क्या करते हैं? तोड़ते हैं। जब तोड़ते हैं तो बच्चों आयन निकलते हैं, आयन, जैसे कैल्शियम के आयन निकलेंगे, उन आयन को रूट एक्जिड्यूट्स पे वो चिपक जाते हैं, और उनको लेकर के कौन जाता है? जाइलम। कौन लेकर के जाता है? जाइलम। तो खट्टा ऊपर को गया, जिससे बाजुएं बनी। अब मेरा हाथ ऐसे खड़ा है, किसकी वजह से? इसमें मिनरल्स हैं अभी तो खड़ा है, अदरवाइज तो ये तो खड़ा ही नहीं हो सकता। अगर मिनरल्स नहीं होंगे, मिनरल्स वीक हो जाएंगे, अगर मेरी कैल्शियम खत्म हो जाए तो ऐसे हाथ खड़ा हो जाएगा? नहीं होगा ना। हर एक जॉइंट वॉइंट कैल्शियम मैग्नीशियम की वजह से काम कर रहा है या नहीं? तो इसी वजह से बच्चों में आज जो भी साइंस सिखाऊंगा, और रियल साइंस सिखाऊंगा, अच्छे शब्दों को यूज करके सिखाऊंगा, और जिससे कभी भूल नहीं सकते। तो खट्टा जाइलम लेकर के आया, ठीक है, उसने ब्रांच बनाई, नंबर ऑफ ब्रांच बनेंगी तो नंबर ऑफ पत्ती ज़्यादा निकलेंगी, मीठा ज़्यादा बनेगा, और मीठा ज़्यादा बनेगा तो मीठा नीचे को जाएगा, और नीचे से खट्टा आएगा। और जब ब्रांच ज़्यादा बनेंगी तो नंबर ऑफ लीफ निकलेंगी, और नंबर ऑफ जो फ्लावर्स ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ फ्लावर्स ज़्यादा बनेंगे तो नंबर ऑफ फ्रूट्स ज़्यादा लगेंगे। और फ्रूट्स किस में कन्वर्ट होगा? फिर सीड में। और सीड में, ज़्यादा सीड में कन्वर्ट होगा तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा आएगी। तो हमें किस चीज़ पे काम करना चाहिए? पौधों की जड़ों पे, पौधों की जड़ों पे। हमें जब कोई रिसर्च करनी है तो हमें सिर्फ क्या बढ़ाना है? पौधों की जड़ें कैसे बढ़ सकती हैं। हम कोई भी पौधा लगा रहे हैं, इसकी जड़ कैसे बढ़ सकती है। और हम लोग क्या कमी करते हैं? हम कोई भी पौधा लगा देते हैं, उसको ऊपर से देते हैं, डीएपी ऊपर से डालेंगे, यूरिया ऊपर से डालेंगे। और हमें जबकि क्या करना चाहिए? पौधा लगाने से पहले सारे ट्रीटमेंट उस मिट्टी में करने चाहिए। ऊपर से कुछ नहीं देना चाहिए, ऊपर से सिर्फ बच्चों पानी दिया जाता है। ये हमारे ड्रॉबैक हैं।
देखो साइंस से मैंने सिद्ध किया या नहीं, अब मानोगे या नहीं? फार्मर्स के बेटे कौन है, बेटे बेटियां? वेरी गुड, शर्माने की जरूरत नहीं है। देखो मैं मजदूर का बेटा होकर के और आपके सामने पे खड़ा हूं, तो कोई झिझक नहीं होनी चाहिए, कोई डर नहीं होना चाहिए, गर्व है, समझ रहे हो? क्योंकि आप तो अन्नदाता हो, आप खिलाते हो सबको। हाँ, और इसीलिए अब इतनी साइंस समझ में आई। अब मैं पूछता हूं आपसे, मिट्टी क्या है? सॉइल बताओ। आपने ये बता दिया, खट्टा और मीठे का तो पता चला। देखो ऐसी मिट्टी जो 5% कम से कम मीठी हो, 45% खट्टी हो और 25% जिसमें हवा हो, 25% पानी हो, उसको कहते हैं मिट्टी। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं ये मिट्टी की ही, तो मैं अपनी पत्नी से पूछता हूँ मिट्टी क्या है, तो सीधी गाली दे करके कहती है तुझे पता नहीं है, डेली झाड़ू लगाती हूँ, डस्ट बाहर करती हूँ, वो मिट्टी दिखाई नहीं देती तुझे? सीधी ऐसे कहती है। तो मेरी पत्नी ऐसे, क्योंकि उसको डेली झाड़ू लगानी होती है, डेली डस्ट साफ करती है। अगर मैं किसान से पूछूं मिट्टी क्या है, तो किसान उस मिट्टी को सुबह जगने पे उसको ऐसे माथे से लगाता है, उसके लिए मिट्टी माँ है, क्योंकि वो प्रोड्यूस करती है, क्योंकि वो प्रोड्यूस करती है, उससे अन्न उगता है, वो उगाने का काम करती है। और अगर ये कुम्हार से पूछूं जो बर्तन बनाते हैं, वो कहेंगे भाई ये मेरी जीविका है, मैं इसको गूंथता हूँ, गूंथने के बाद बर्तन बनाता हूँ जिससे मेरी जीविका चलती है। और माइन इंजीनियर से पूछूं तो वो कहेगा मेरे लिए तो ये ओवरबर्डन है, मेरे लिए तो ओवरबर्डन है, भाई मिट्टी के नीचे ही मेरा माल है। माइन इंजीनियर तो वही कहेगा। तो मिट्टी की डेफिनेशन हर आदमी अपने वे में देगा, लेकिन हम जो आप मिट्टी की डेफिनेशन आपको बता रहे हैं, ऐसी मिट्टी जो 5% मीठी, 45% खट्टी, 25% पानी और 25% हवा, उसको कह। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, जब तक पढ़ोगे, जब तक लाइफ में बुढ़े भी हो जाओगे, मिट्टी की डेफिनेशन भी नहीं भूलोगे, भूल जाओगे। ऐसी मिट्टी जो 5% मीठी, 45% खट्टी, 25% हवा, 25% पानी, उसको कहते हैं मिट्टी। और ये प्रेजेंटेशन आप सभी ले लेना, क्योंकि जो फार्मर्स हैं एटलीस्ट वो उनके घर पे ये देख लेंगे मिट्टी में क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। ये मिट्टी में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगर ये चीज़ नहीं है या कोई कम या ज़्यादा है, तो इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, उस पार्ट पे हम रिसर्च करके बता देते हैं। देखो बड़ा सिंपल है कि भाई हमारी ये मिट्टी है, इस मिट्टी में ये चीज़ की कमी है, ईजिली उस मिट्टी में वही चीज़ मिलानी है और कुछ करना नहीं। तो इसमें पैसा भी कम लगा, खर्चा भी कम आएगा। जहाँ आपको सब कुछ डालने के लिए बहुत पैसा लगता था, कम पैसा लगेगा, और हमें जो ज़रूरत है वही डालना है, जो ज़रूरत है वही डालना है। तो हमारे महाराष्ट्र की मिट्टी में किस चीज़ की कमी है, कोई बताएगा मुझे? किसान की बेटी हो, आपको बताना पड़ेगा कुछ। न्यूट्रेंट की कमी हम कह सकते हैं। हमारे माझी महाराष्ट्र की जो मिट्टी है, एक तो हमारे पास मिट्टी बहुत कम है, नीचे पत्थर हैं, छोटी सी पार्टी है मिट्टी। दूसरा, हमारी मिट्टी में फास्फोरस नहीं है, पोटेशियम नहीं है, क्योंकि हमारे ये बसाल्ट है, इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन है। कहीं यहाँ पहले काली मिट्टी है ना, लावा वावा आया होगा, जले होंगे, तो ये जिसमें पोटेशियम और फास्फोरस पूरा जल रखा है। और फास्फोरस क्या होता है? बच्चों इस चीज़ को सीखो, इम्पोर्टेंट। फास्फोरस क्या है? मिनरल है, इम्पोर्टेंट मिनरल है, डीएनए का पार्ट भी है, डीएनए का पार्ट है ना। पोटेशियम सेल का पार्ट है, अगर पोटेशियम नहीं होगा तो इनकी सेल ओपन नहीं होगी, बंद नहीं होगी, खुलेगी नहीं, बंद नहीं होगी, ऑक्सीजन इधर उधर नहीं जाएगा, ट्रांसपोर्ट नहीं होगा कुछ भी। तो फास्फोरस तो डीएनए का मेन पार्ट है, जिसके अंदर फास्फोरस नहीं होगा उसको हम क्या कह सकते हैं? बैरन। पता है आपको? अगर फास्फोरस नहीं है बॉडी में तो हम उसको बैरन बोल सकते हैं। बैरन को क्या कहते हैं हिंदी में? बांझ। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं समझने की। अगर मेरी मिट्टी में ये फास्फोरस नहीं था तो भाई हम कहेंगे ना ये तो डिग्रेडेड मिट्टी है या बांझ मिट्टी है, यार इसमें कुछ नहीं आएगा। तो हमें वो फिर एडिटिव डालने पड़ते हैं उस मिट्टी में, तो हमें वही डालना है। इसीलिए हम इन सब चीज़ों की जांच कर लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है। आगे चलते हैं।
मिट्टी में जो मैंने बैक्टीरिया और फंजाई की बात करी, ये काम करते हैं। जो चीज़ ज़्यादा होती है उसको मेंटेन कर लेते हैं, और जो चीज़ कम होती है उसको बैलेंस कर लेते हैं। बफर सॉल्यूशन की तरह बैक्टीरिया और फंजाई काम करते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी को लेकर के हमने फ्लाई ऐश डंप पे काम किया था। कहाँ काम किया है? फ्लाई ऐश डंप। फ्लाई ऐश क्या होती है? देखो अभी मैं बीमारी पे बात कर रहा हूँ, फ्लाई ऐश से बीमार होते हैं लोग, ये बात सत्य है। अगर ये इनहेल हो जाए, फ्लाई ऐश किसी को पता है क्या होती है? किसी ने कभी सुना है फ्लाई ऐश की प्रॉब्लम है? तुम्हें पता है नागपुर में भी फ्लाई ऐश की समस्या है, उड़ के आती है ये। थर्मल इंडस्ट्री तो सुनी होंगी, बिजली कैसे बनती है? हैं? ये जो कोयला तो पता है, अपने महाराष्ट्र में कोयला खूब निकलता है रे बाबा, हैं? उमरेड की साइड से कोल की वो हैं, इधर कामटी में भी हैं कोल की माइन, निकलता है ना। कोल क्या है? एनर्जी प्रोडक्ट है। क्या है? एनर्जी। कोल मिनरल्स में नहीं आता। कोल किस में नहीं आता? मिनरल्स में नहीं आता। कोल क्या है? एनर्जी है, एनर्जी है। तो जो कोल मैं एनर्जी कह रहा हूँ, ये क्या है? कोल की डेफिनेशन क्या है? कोयला की परिभाषा क्या है? कोयला एक फॉसिल है ना, ये भी एक जीवाश्म है ना। फॉसिल माने जीवाश्म है ना। तो अब मैं ये पूछता हूँ, ये क्या होते हैं बच्चों? अर्थ के सब्सिडेंस होते हैं। अर्थ के क्या होते हैं? जो हमारी अर्थ माने भूमि, जो हमारी भूमि है उसके सब्सिडेंस होते हैं। और ये सब्सिडेंस को जब हम 800 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पे जलाते हैं, तो जो ऑर्गेनिक इसमें कुछ भी रहता है वो सब क्या होता है? जल जाता है। 800 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब इसको जलाते हैं तो बहुत सारी एनर्जी निकलती है। कोयला को एनर्जी निकलती है, तो उस एनर्जी से पानी को गर्म किया जाता है बहुत बड़े बड़े बॉयलरों में। उसमें भाप निकलती है, और उस भाप में इतनी ताकत होती है कि वो टरबाइन को चलाती है। और जब टरबाइन चलती है तो उससे इनकी मैकेनिकल एनर्जी डेवलप होती है। ऐसे चलती है ना, ऐसे घूमती है। उस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे ये बल्ब जल रहा है, समझ में आ गई? अब ये जल गई, 800 से 1200 पे वो जला दिया। जलाने के बाद में इनऑर्गेनिक एलिमेंट बेटे जलते नहीं हैं। क्या नहीं होते? क्योंकि उनका 1200 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा वो होता है बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट। जैसे बच्चों हमारी जो मिट्टी होती है उसमें एक सिलिकॉन होता है। ये सब जो कांच हैं, ये जो कांच लगा हुआ है, ये किसका बना हुआ है? हैं? सिलिका के है ना। हाँ, तो इनका टेम्परेचर कितना होता है बच्चों? 1200 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर होता है। और ये मिट्टी में कितने परसेंट है बच्चों? 18 से 22% तक हो सकता है। कितना हो सकता है? अच्छी चीज़ बता रहा हूँ ना, जिसको नहीं पता होगा तो उसको अच्छा लगेगा। तो जब ये जलते नहीं हैं, लेकिन ये एक्टिव स्टेज में आ जाते हैं। कैसी स्टेज में आते हैं? और ये एक्टिव स्टेज में आकर के बच्चों जब ओके, कोई बात नहीं, मैं जरा इसे ही दिखाऊंगा पहले। ये है फ्लाई ऐश। ये ऐसी राख तो देखी होगी ना, राख जो कोल को जलाने के बाद में ये राख निकलती है, उसको हम फ्लाई ऐश कहते हैं, क्योंकि वो इजीली उड़ने लग जाती है। बेटे इसमें से जब ऑर्गेनिक पार्ट निकल जाएगा तो बाइंडिंग निकल जाएगी। ऑर्गेनिक क्या करता है? बाइंड करने का काम करता है। क्या करने का काम करता है? आटा किसने गूंथा है? इधर तो मैडम ने सबने गूंथा है। बच्चों आपने गूंथा है? हैं? गूंथते हो ना। तो अब देखो, जब आटे को हम गूंथते हैं तो जब आटा रहता है, जब उसमें कोई बाइंडर नहीं रहता, जैसे हमने पानी डालते हैं तो उसके बाइंडर एक्टिव हो जाते हैं। और फिर अगर इतना सा भी पकड़ रहा हूँ, पूरा ऐसे आ जाता है नहीं? तो उसमें क्या बाइंडर होता है पता है? कौन बाइंडर है उसमें? कैसे ऐसे बन जाता है? ऐसे खींचो तो यहाँ तक ऐसे हो जाता है। क्यों होता है बेटे? वो प्रोटीन की वजह से होता है। उसमें वो प्रोटीन होती है। कौन सी प्रोटीन है? ग्लूटीन। आपने बोला ना, इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा आंसर दिया। कौन सी प्रोटीन होती है? ग्लूटीन। वो इंपॉर्टेंट प्रोटीन होती है। वो कुछ लोगों में, हमारे देश में 20,000 में से 50,000 में से एक आदमी ऐसा है, उस ग्लूटीन प्रोटीन की वजह से उसको एलर्जी होती है, इसीलिए उसको गेहूं की रोटी खाने के लिए
नहीं कहते। ये सिर्फ ग्लूटीन प्रोटीन गेहूं में ही सबसे ज़्यादा होती है मैक्सिमम। तो उस प्रोटीन वो एक बाइंडर की तरह काम करता है, वो इसको ऐसे लचीला बनाता है, और जब हम ये इसको खा लेते हैं तो वही डाइजेस्ट हमारी उस रोटी को करवाता है सबसे फास्ट। तो गेहूं में भी कितनी प्रोटीन होती है? लगभग 14% प्रोटीन होती है। कितनी होती है? अब प्रोटीन कैसे निकालते हैं? कोई बात नहीं। तो मेरा कहने का मीन्स ये है कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो ऐसे इन फ्लाई एश डंप में सिर्फ हम बाइंडर डालते हैं। क्या डालते हैं? बाइंडर। और बाइंडर में कौन सा बाइंडर क्या हो गया इसमें जब डालने के लिए? गोबर की खाद। क्या डालते हैं? गोबर की खाद। गोबर की खाद मीन्स वही FYM, बहुत सारे नामों से जाना जाता है। FYM, केंचुआ खाद भी कहते हैं कुछ लोग, हैं गेंडूर खाद क्या के नाम से कहते हैं। तो सिर्फ उसे डालते हैं हम इसमें। और एक और चीज़ डालते हैं, वो है बैक्टीरिया और फंजाई। इन सब को डाल करके बच्चों, जब हम इन सब को डालते हैं इनमें, तो जैसे आपने देखा होगा फॉर जो इस तरीके के एरिया को हम ऐसे एरिया में कन्वर्ट कर देते हैं 2 साल के अंदर। इनकी जहाँ बिल्कुल बैरन है वहाँ 40 से 50 फुट का जंगल खड़ा हो जाता है। ये सही है। कैसे? देखो, बैम्बू हम लेते हैं, इसमें बैम्बू एक प्लांट है, उसको यूज करते हैं। तो ये किस तरीके से बैम्बू लगभग हमारे देश में 140 तरह के हैं। कितने तरह के हैं? लाल, पीले, नीले, काले, गुलाबी, सब डिफरेंट कलर में हैं। और बंचेज में ज़्यादा रहते हैं, ट्रॉपिकल में, टेम्परेट में बिखरे हुए रहते हैं। तो ये बैम्बू लेते हैं। बैम्बू लेकर के जब हम काम करना स्टार्ट करते हैं तो आप देखेंगे इस तरीके के ये बैम्बू हमने लिए और हमने काम स्टार्ट किया। तो देखो, पहले गड्ढे करे, फिर 90 दिन में बांस ऐसे हो गया। सेम एरिया है, 1 साल में देखो सेम एरिया। ये देखेंगे ऐसे हो रहा है या नहीं? बन रहा है जंगल, स्ट्रक्चर हो रही, स्ट्रक्चर सेम एरिया। और बच्चों आप ये देखो, अमेज़न का सा जंगल 2 साल में बन गया, बना या नहीं? तो ये बताओ, मैंने इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं करी, सिंपल साइंस का इस्तेमाल किया है। सिंपल साइंस का इस्तेमाल करके हम इस तरीके के डिग्रेडेड लैंड के, ये फ्लाई एश के डंप हैं, हम कोई भी डिग्रेडेड लैंड को, किसानों की डिग्रेडेड लैंड की समस्या सॉल्व कर सकते हैं, और भी जो इंडस्ट्रियल लैंड की समस्या को सॉल्व कर सकते हैं, पॉल्यूशन की प्रॉब्लम को रोक सकते हैं। इस तरीके के हम काम, हमने एक ही एरिया में ये काम नहीं किया बच्चों, हमने पॉल्यूशन को भी रोका। जहाँ डस्ट उड़ती है उसमें बहुत सारे पॉल्यूशंस रहते हैं और बीमारी होती है, ब्रोंकाइटिस, सिलिकोसिस, क्योंकि सिलिका रहता है ना इसमें। अगर सिलिका इनहेल हो जाता है, सिलिकोसिस नाम की बीमारी होती है बेटे। और अस्थमा, और ये 50 साल तक बॉडी में जब तक इम्यूनिटी रहती है तब तक दिखाई नहीं देती। 50 साल के बाद बेटे सुबह शाम खांसी रहती है, और 60 साल के बाद में वो पूरा भयंकर रूप ले लेती है, क्योंकि लंग्स काम करना बंद कर देते हैं, बहुत कम काम करते हैं, फिर मशीन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ऐसे एरिया में जहाँ प्रॉब्लम्स हैं, उस एरिया में इस तरीके की हमने टेक्नोलॉजी डेवलप करके इस तरीके से हमने सॉल्यूशन निकाला। तो ये देखो, सिंपल चीज़ों को लेकर के साइंस को डेवलप करके और साइंस का इस्तेमाल करके उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। तो वही CSIR, हमारी एक CSIR नीरी संस्था है। नीरी मीन्स नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसने ये टेक्नोलॉजी डेवलप करी है। और सिंपल टेक्नोलॉजी है, इसमें बहुत कम खर्च आता है, कम खर्च दे करके और अच्छा काम किया जा सकता है। तो ये आगे देखो, ये इसको बहुत सारे लोग देखने गए, हमारे डायरेक्टर और भी इंस्टीट्यूट्स के डायरेक्टरों ने ये सब विजिट करे, और तुम देखोगे इस तरीके के पूरे एरिया को अमेज़न के जंगलों में कन्वर्ट कर दिया। अमेज़न मीन्स बहुत डेंस जंगल में कन्वर्ट करते चले गए हम। जहाँ देखो एक पौधा लगाओ, उसको भी पानी देना मुश्किल होता है, हम ऐसे जंगल से बनाते चले गए। तो हमें क्या करना होता है, पेड़ पौधे लगाने के समय क्या करना पड़ता है बताओ? राइजो स्फीयर, राइजो माने रूट्स, स्फीयर जहाँ हम पौधा लगा रहे हैं उसके चारों तरफ, वहाँ ट्रीटमेंट देना होता है। जड़ों में ट्रीटमेंट देना पड़ता है। कहाँ देना पड़ता है? जड़ों में। वही, और पेड़ लगाने से पहले ये ट्रीटमेंट दिया जाता है। पेड़ लगाने के बाद में सिर्फ क्या दिया जाता है? पानी, अगर पानी की ज़रूरत है तो। अदरवाइज हमें पौधा भी ऐसा ही सेलेक्ट करना है जहाँ पानी की ज़रूरत न पड़े, हमारी प्राकृतिक कंडीशंस के ऊपर वो हो जाए, क्योंकि पानी की बड़ी मुसीबत है। हमारे महाराष्ट्र में पानी तो पीने के लिए भी कम पड़ जाता है, बरोबर है ना? तो हम उस हिसाब से हमें प्लानिंग करनी है कि जो हमारी बरसात है वही पानी
हमारे उसमें काम आए। ये बहुत सा एक एरिया नहीं है, हमने नाले की जो प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व करी, जहाँ इरोजन की प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व करी इसको इस्तेमाल करके। ये बहुत सारे एरियाज़ को अब बात करते हैं। नॉट ओनली हमने वो एरिया सॉल्व करे, वहाँ बायोडाइवर्सिटी कैसे डेवलप होती है बच्चों, चिड़िया कैसे आती हैं, बर्ड्स कैसे डेवलप होती हैं, एवरीथिंग वी हैव डेवलप। अब मैं बात करता हूँ साइंस की। अब आप लोगों को बनाना है मुझे साइंटिस्ट, वो भी हेल्थ केयर में, फार्मास्यूटिकल्स में। ये टाइटल पढ़ो ज़रा, जिसकी अच्छी आवाज़ हो, जिसकी भी अच्छी आवाज़ हो पढ़ो, इंटरेस्टिंग है, आपको सुनने में मज़ा आएगा। बैम्बू एज ए कल्टिवेटेड मेडिसिनल ग्रास फॉर इंडस्ट्री। अब हमने देखो बांस को लिया, मैंने आपको बताया लगभग 140 तरह के बांस हैं हमारे देश में, और जिनके 31 जेनरा हैं। तो 140 तरह के बांस को लेकर के पहले हमने देखा कि हमारे देश में किस तरह के बांस हैं, और एक टाइटल बनाया हमने जिस्ट। आपने देखा होगा जिस्ट ऑफ पेपर। कोई भी चीज़ पर रिसर्च करने से पहले बच्चों, पहले हम देखते हैं कि मेरा ये टाइटल रहेगा, ये इंट्रोडक्शन रहेगा, इंट्रोडक्शन के बाद में ये मेथोडोलॉजी रहेगी, इन चीज़ों पे मैं काम करूँगा, इस चीज़ में ये चीज़ मेरी नई रहेगी, ये चीज़ ओल्ड टाइम जिन्होंने काम किया उसके बारे में बताऊँगा, और जो काम नहीं हुआ है वो भी मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले हमने रिसर्च करने से पहले सबसे पहले हमने रिव्यू किया कि किसने क्या क्या रिसर्च कर रखी है। देखो जब हम किसी चीज़ को रिसर्च के लिए लेते हैं, नई खोज करते हैं, नया फॉर्मुलेशन बनाते हैं, तो पहले देखते हैं, जैसे बाबा रामदेव ने दंत कांति जब पेस्ट बनाया था, तो दंत कांति तो नाम कहीं नहीं है पूरे विश्व में, नहीं कहीं नहीं था ना दंत कांति, दंत और कांति अजीब सा नाम है ना। तो जब उसने बनाने से पहले ये सारे पेस्ट का अध्ययन किया होगा है ना, ये कैसा है, इसने क्या डाला, इसने क्या डाला, इसने क्या डाला, इसके भाई मैं ऐसा अलग अलग क्या ऐसा बनाऊं जिसकी मार्केट वैल्यू भी हो, जो इफेक्टिव भी हो, जो कारगर भी हो, वो काम भी करे, और जिसमें मार्केट में बूम ला करके दिखा दूं। समझ रहे हो, एक नया सेक्टर क्रिएट कर दूं इसमें भी। वही होती है, वही उसी को क्या कहते हैं, रिसर्च। क्या कहते हैं, री माने पुनः, री माने पुनः, और सर्च माने ढूंढना। कोई भी शब्द कठिन नहीं है, उनको जैसे जो अंग्रेजी के शब्द हैं इनसे डरने की भी ज़रूरत नहीं है। आप मुझसे 2-4 घंटा भी इंग्लिश में बाद में कड़क कड़कड़ कड़कड़ बोल दूंगा, और मैंने कभी नहीं, बाबा 12वीं तक तो मैंने कभी देखी नहीं इंग्लिश होती क्या है, लेकिन मैंने सब शब्दों को तोड़ना स्टार्ट कर दिया, इसका मीनिंग क्या है, बस उसके बाद में इतना एक्सपर्ट हुआ मैं, फिर मैंने पीछे की तरफ मुड़ के नहीं देखा। इसलिए आप पीछे हो ही नहीं, आपको सबसे आगे आना है। क्या करके आना है, रिसर्च, री माने पुनः, सर्च माने ढूंढना, तो वही करना, कुछ भी नहीं। रिसर्च बहुत सिंपल है। तो हमने एक टाइटल बनाया, भाई बैम्बू क्या मेडिसिनल ग्रास बन सकती है इंडस्ट्री के लिए, ये टाइटल बनाया। और हमने इसमें देखो क्या देखा, इंट्रोडक्शन लिखा, मेथोडोलॉजी फॉर रिव्यू। हमने कहाँ से पेपर कलेक्ट करे, जैसे नेट पे भी हमने कोई शब्द डाला, बैम्बू डाला, मेडिसिनल डाला, ये शब्द डाले, तो ये कौन से शब्द डाले, कैसे हमने रिसर्च करी, वो सब मैं बताऊंगा। तो मेथोडोलॉजी फॉर रिव्यू में हमने क्या लिखना है। अब जैसे कोई किसी के बारे में आपको कुछ देखना है, कुछ मटेरियल कलेक्ट करना है, तो आप कहाँ से कलेक्ट करते हो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, नेट का इस्तेमाल करते हो ना, तो पहला शब्द हो गया इंटरनेट। मेथोडोलॉजी में एक शब्द तो आएगा ही, वी हैव यूज्ड इंटरनेट, है ना भाई। इंटरनेट सर्च इंजन है ना, तो सर्च इंजन में हमने क्या चूज किया, इंटरनेट का इस्तेमाल किया। इंटरनेट में गूगल है, गूगल। अब गूगल में बहुत सारे हमने गूगल स्कॉलर देखे, क्योंकि लोगों ने गूगल स्कॉलर बनाया। किसी ने अगर 4 पेपर भी पब्लिश करे ना, भूख लग रही है ना, नहीं अभी थोड़ा बोर हो रहे हो, मैं जल्दी कर रहा हूँ, तो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ इसलिए बता रहा हूँ, कैसे आप साइंटिस्ट बन सकते हो। तो हमने इस पेपर को लिखने के लिए ये टाइटल पे फिर ये जिस्ट बनाया। पेपर लिखने से पहले उसका पहले खाका खींचा। बेटे रिसर्च करने से पहले सबसे पहले उसका खाका ही किया जाता है, क्या क्या कैसे किया जाए, फिर उस पर काम किया जा सकता है। तो पहले जिस्ट बनाया जाता है। कोई चीज़ लिखने से पहले क्या बनाया जाता है, जिस्ट। अगर जिस्ट बन गया
तो फिर देखा जाता है इन सब चीज़ों पे, ये जो मैं हेडिंग दे रहा हूँ इन पर सब पर रिसर्च हो रखी है। फिर मैंने देखा लिखा है, देखो, यानी कि चैलेंज इन फ्यूचर प्रोस्पेक्टर फॉर बैम्बू एज ए मेडिसिनल प्लांट। हम कैसे चैलेंज कर सकते हैं, कैसे यानी कि कैसे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट में क्या क्या और रिसर्च कर सकते हैं बैम्बू पे। आप इमेजिन करेंगे जब ये जिस्ट मैंने बनाया ना, इस पर काम किया, 2 महीने तक काम किया। सर्च इंजन क्या यूज़ किया हमने, गूगल में इंटरनेट से इस्तेमाल किया, इंटरनेट और इस गूगल को इस्तेमाल किया, एक गूगल स्कॉलर को लिया। देखो मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या लिया। पेपर पब्लिश हो गया लगभग 8 इम्पैक्ट फैक्टर में बन के। सब सर्च क्या क्या किया, देखो मेथोडोलॉजी ये लिखी, कीवर्ड बैम्बू मेडिसिन, जो मैंने उसमें हेडिंग डाली है वही कीवर्ड लिए। कोई देखो कोई रॉकेट साइंस नहीं करी, देखो सिंपल शब्दों में साइंस को समझो। और आप कैसे जिस्ट बना सकते हो वो भी मैं सिखा सकता हूँ अभी इसी समय ही, 10-10 मिनट में ही एक नई चीज़ सिखा सकता हूँ। और कोई देखो जन्म से वैज्ञानिक नहीं होता है या पैदाइशी वैज्ञानिक नहीं होता। हम कोई ऐसे नहीं है कि जिनकी सोने के दांत लेके पैदा हुए हैं। भैया हम तो किसान गरीब के परिवारों में पैदा हुए हैं। हमें वैज्ञानिक क्या उससे भी ऊंचा बनना है, उससे भी ऊंचा बनना है। तो वी हैव टू डू हार्ड वर्क, वी हैव टू डू हार्ड वर्क। और अपना जो फोकस है हम उसको चेंज नहीं कर सकते। जो हमारा फोकस है उसको कभी चेंज नहीं कर सकते। जो अभी हमारा फोकस है, अगर हमारा डिप्लोमा कोर्स है तो उसको टारगेट, और अगर हमारा डिग्री कोर्स है तो उसको टारगेट। उसको ऐसा टारगेट करना है, इतनी ज़्यादा नॉलेज उसमें अचीव करनी है कि उसमें हमें कोई पीछे छोड़ नहीं सके, उसमें कोई पीछे छोड़ नहीं सके। तो आप देखो सिंपल जिस्ट को लेकर के 8 इम्पैक्ट फैक्टर पेपर को पब्लिश हुआ, अभी रिसेंटली पब्लिश किया। तो बैम्बू में पूरी मैंने रिसर्च करी इन 2 महीने में, क्या क्या यूज किया। देखो इसमें सब लिखा है, एसिमिलेशन यानी कि पबमेड, वेब ऑफ साइंस और मेंडले, आरजी रिसर्च गेट और गूगल स्कॉलर, ये सब चीज़ सेलेक्ट करें। और आप ये देखेंगे इसमें कितने 192 आइटम्स, हमने 192 पेपर डाउनलोड करे जो इन शब्दों से मिलते जुलते थे। इन शब्दों को लेकर के वो पेपर मिल 192 दिखाई दिया बच्चों, ये धीरे धीरे यहाँ लिखा हुआ है। तो 192 पेपर हमें मिल गए जो जिन्होंने रिसर्च करी थी बैम्बू पे पूरे विश्व में, कि भाई क्या क्या इन्होंने रिसर्च की है। जब हमने इन सब के कंक्लूजन और पार्ट देखे तो हमें इसमें लैकुना कमी पाई गई कि यार इन चीज़ों पर सब पे रिसर्च हो गई, इसमें ये पार्ट पर रिसर्च नहीं। तो जिस पार्ट पे रिसर्च नहीं हुई हमने उसको फ्यूचर प्रोस्पेक्टस बना दिया, क्योंकि फ्यूचर में रिसर्च इन पार्ट पे की जा सकती है ना। इंपॉर्टेंट बच्चों, अच्छी चीज़ है ना कि और जिन पार्ट पे रिसर्च होगी उनकी हेडिंग बना बना के उसके बारे में लिख दिया कि राम सिंह ये कह रहे हैं, हरी सिंह ये कह रहे हैं, धन सिंह ये कह रहे हैं, जगदीप सिंह ये कह रहे हैं। मीन्स जिस जिस वैज्ञानिक ने रिसर्च की कि इन्होंने ये खोज करी है, ये बताया, सिर्फ वही लिखा। तुम उसको मराठी में भी लिख सकते हो, अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है मराठी में लिखो। और टूल्स कन्वर्ट वाले हैं, प्लीज़ कन्वर्ट इट इन इंग्लिश। और फिर कोई जो आप अच्छा एक्सपर्ट है उसको कहे यार थोड़ा सा ग्रामेटिकल दे, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है ग्रामेटिकल को वहाँ देख लो। हो गए ना, हो गए ना, हम भी वैज्ञानिक, हम किसी से कम थोड़ा ही हैं। जब वो सर्च इंजन सब लोग यूज़ करके वो भी आगे बढ़ सकते हैं तो हम क्यों नहीं, हम क्यों नहीं। सो वी कैन डू, वी कैन डू, वी कैन डू। वी हैव टू मोर यानी ऑप्टिमिस्टिक बनना पड़ेगा, हमें पॉजिटिव रहना पड़ेगा, हमें पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहना पड़ेगा। हमें आगे बढ़ना है ना, हमें हताश नहीं हो सकते, हमें आगे बढ़ना है, हमें हमेशा लड़ाई रहना पड़ेगा। हमें अपने टारगेट को मिस नहीं करना है। हमें दिन और रात, दोपहर और शाम एक ही चीज़ दिखाई देगी, हमारा डिप्लोमा और डिग्री कोर्स। पहले हमारा टारगेट वो अचीव करना है, वो गोल अचीव करना है। आफ्टर दैट वी हैव टू अचीव आवर अनदर गोल। तो गोल से मिस नहीं होना है, गोल पे टारगेट जमाना है। गोल पे क्या करना है, टारगेट जमाना है। बहुत बड़े कंपटीटर रहते हैं तो उस गोल में इतना टारगेट जमा लेना है कि तुमसे ज़्यादा अच्छा कोई ना बोल सके, तुमसे ज़्यादा अच्छा ना कोई रिसर्च कर सके, तुमसे अच्छा ज़्यादा सोच सके। समझ गए? नाउ यू कैन डू, आप कर सकते हो ना। साइंटिफिक रिसर्च कैसे होती है, किस तरीके से रियली, जैसे किसी ने कहा कि मैं सिर्फ मुझे ये देखने है कि इनकी नाक से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और इनका इलाज क्या है, तो इस पर पूरी ज़िंदगी भर रिसर्च हो सकती है।
देखो बीमारी हम शरीर को बीमारी कहाँ कहाँ से लगती है? नाक, मुंह, यही दो सोर्स हैं, और भी ओपनिंग्स है, जैसे ये है, जहाँ जहाँ से वो, लेकिन मेजर यहीं से, यहाँ से और यहाँ से। और ये कौन कौन सी चीज़ों से हो सकती है? पानी और भोजन, इन दो से भी हो सकती है ना। पानी और भोजन अगर मान स्वस्थ रही जाए तो इसमें इससे हो सकती है। तो ये चीज़ें अब क्या इनकी फूड से कौन कौन सी डिसीज हो सकती हैं, तो ये आपको सोचना, आपको हमें किस पर अच्छी रिसर्च कर सकता है, और उस पार्ट पे उसमें कैसे कौन कौन से शब्दों को लेकर के कैसे कैसे जिस्ट बना सकता हूँ। तो मैंने जिस्ट बनाया, देखो पेपर पब्लिश किया, और आप यकीन नहीं मानेंगे उसके बाद में वो एक रिव्यू पेपर पब्लिश किया, मेरा बेस बन गया। रिव्यू पेपर इसीलिए किया जाता है बच्चों, बेस बनाने के लिए कि पूरे विश्व में इस चीज़ पर किस किस ने क्या क्या रिसर्च करी है, और अब हम इसमें इस चीज़ के एक्सपर्ट बनने जा रहे हैं। समझ गए ना भाई, जिस चीज़ पर रिसर्च नहीं हुई इसके एक्सपर्ट कौन बनेंगे? हम, वही तो रिसर्च है। तो अब धीरे धीरे, जैसे दूसरा पार्ट, कमर्शियल क्लस्टरिंग ऑफ सस्टेनेबल इन इंडिया, मुझे ये पता चल गया था कि भाई इस पर किसी ने रिसर्च नहीं करी। जो मैंने उसमें फ्यूचर पर्सपेक्टिव बताए ना, मैंने खुद ही इस पर रिसर्च करना स्टार्ट कर दी, और देखो ये रिसर्च करी, ये भी मैंने 8 इम्पैक्ट फैक्टर में मारा, तो इसमें इतने बैम्बू, इतने कमर्शियल हमने बता दिए। तो देखो है ना अच्छी रिसर्च, और ऐसी जो प्रैक्टिकल रिसर्च जो मेरे देश को काम आए, मेरे किसान के काम आए, मेरे इंडस्ट्रियलिस्ट के काम आए, मेरे हर व्यक्ति के काम आए, जो मेरे देश में तरक्की कर सकता है, मेरे देश को डेवलप बना सकता है, और मेरे महाराष्ट्र को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी में कन्वर्ट कर सकता है, वही रिसर्च हमने करी। तो आपको वही रिसर्च करनी है जो हमारी सोसाइटी के काम आए, जो हमारे समाज के काम आए, जो हमारे काम आए, और जो डेली यूज में काम आए। देखो जो डेली यूज में काम आए, जो हमारे काम आए, जो सोसाइटी के काम आए, और जो इंडस्ट्री के काम आए, और जो ओवरऑल पूरे समाज के काम आए, उस तरीके की रिसर्च हमें करनी है। हेल्थ केयर में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड इस तरीके से हम रिसर्च कर सकते हैं, उसी तरीके से हम सोच सकते हैं, उस तरीके से टारगेट हम अचीव कर सकते हैं। तो ये दूसरी रिसर्च। फिर मैंने एक पेपर लिखा, इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन ऑफ फ्लाई एश डिस्पोजल एरिया। फिर फ्लाई एश पर मैंने प्रूव कर दिया कि हाँ आगे हैं। फिर कैसे डिस्पोजल किया जा सकता है फ्लाई एश को, किस तरीके की रिसर्च की जा सकती है, उसके रूट्स में क्या हम कर सकते हैं। खैर समय हो गया क्या है? देखो अगर आपका मन नहीं लग रहा होगा तो मैं जय हिंद करके, और अच्छा लग रहा हो तो बताओ, हैं चांगला है रे बाबा, हैं हाँ सब कुछ चांगला है। तो 10 मिनट और लेता हूँ। तो देखो हमने फिर ये प्रूव किया, जो फ्लाई एश होता है उसमें बैम्बू ही क्यों लगाना चाहिए, पेड़ों को क्यों ना लगाना, क्योंकि बैम्बू की जड़ें ऊपर ही रहती हैं, और वो एक लाइव नेट पर बना लेती हैं बेटे, फाइब्रस रूट सिस्टम होती है, पतली पतली छोटी छोटी। देखो जो बांस होता है, अगर आप कभी किसी ने बांस देखा हो, उसमें 2 तरह के स्टेम होते हैं, और नीचे सिर्फ जड़ रहती हैं। एक स्टेम को जो वो आपको जो दिखाई देता है ऊपर सामने पे, एक स्टेम को जमीन के अंदर रहता है, जिसको हम राइजोम कहते हैं, थोड़ा स्वेलिंग होता है, मोटा सा रहता है, वो स्टेम ही होता है बेटे। उसमें जो गांठ होती है पास पास रहती है, और हर गांठ से बेटे एक, इनकी हर गांठ में एक कली निकलती है, उसको एक्सिस कहते हैं, उससे नया बांस निकलता है। समझ गए ना? तो इसी तरीके से जो अंडरग्राउंड स्टेम रहता है, उसकी जो जो लोड रहती है, गांठ रहती है, वो पास पास रहती है, और इधर से एक कली निकलती है, इधर से एक कली, इधर से एक कली, और वो गुच्छा का रूप ले लेती है। तो ये समझा है गुच्छा कैसे बनता है बांस में? 2 स्टेम होते हैं, एक ऊपर और एक जमीन के नीचे, और स्टेम के नीचे ही क्या रहता है? रूट्स, और रूट्स के चारों तरफ के एरिया को क्या कहते हैं? राइजोस्फीयर। और अपने जैसे अपना पेट है, इसलिए प्लांट में क्या होता है? रूट्स, वो राइजोस्फीयर उसका। और मिट्टी की डेफिनेशन क्या है? हाँ, ऐसी मिट्टी जो 5% मीठी, 45% खट्टी, 25% पानी, और 25% हवा। कभी भूल सकते हो? अपनी लाइफ लॉन्ग नहीं भूल सकते, और अपने बच्चों को भी सिखाना तो मिट्टी इसको कहते हैं। और बेटा एक चीज़ और ध्यान रखो, मिट्टी का साइज होता है जो 2 mm, जैसे हम आटे को चलनी होती है, सीविंग करते हैं ना, तो वो 2 mm की होती है, और ऊपर जो आती है वो भुस्सा होता है, भुस्सी, जो भी वेस्ट या बड़ा पार्ट आता है तो उसको एक पॉलीथीन में रख लेते हैं, जैसे इतनी थोड़ी सी होती है, अरे वहाँ ले जा, गाय रहती है वहाँ डाल देंगे, या उधर कर देंगे,
भारतीय होते हैं ना, हम कहते हैं एक तिनका भी बेकार ना जाए। हम भारतीयों में ये हमारी रहती है कि कोई भी चीज़ बेकार ना आए, क्योंकि हमें पता है किसान किस तरीके से मेहनत करके, किस तरीके से उसको सिंचाई करके कैसे उपजाऊ बनाता है, कैसे करता है। तो हम हर चीज़ का, तो जो जिसको चलनी से जब आटा हम गूंथते हैं तो 2 mm के नीचे का जो साइज है उसकी हम रोटी बनाते हैं और उसको हम खाते हैं, वो ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है। वही 2 mm के नीचे बच्चों, जो 2 mm के नीचे के साइज से नीचे को निकल जाती है, वो क्या होती है? मिट्टी। वो क्या होती है? मिट्टी। बाद बाकी तो बेटे ग्रेवल, पेबल्स, स्टोन्स, बिग स्टोन्स, यही सब रहते हैं। तो मिट्टी का साइज क्या होगा? 2 mm के नीचे जो होगी वो क्या है? मिट्टी। क्योंकि हम क्या खाते हैं? 2 mm के नीचे का ही खाते हैं ना, खाते हैं नहीं? बरोबर है ना? जब हम आटा को सीव करते हैं तो 2 mm के नीचे, और पेड़ पौधे भी बेटे 2 mm के नीचे के जो साइज रहता है उसी में ही पनपते हैं, ग्रो करते हैं। बाद बाकी तो ग्रेवल्स, पेबल्स, स्टोन्स, बिग स्टोन्स ये रहते हैं, उनसे अपटेक नहीं होता, उनसे कुछ निकलता नहीं है। उनको फिर तोड़ने का काम कौन करता है? माइक्रोब्स। तो मैं अब किसी से पूछूंगा, नाराज मत होना, ना ही देखो साइंस में नाराज नहीं होते हैं। अगर मैं कुछ पूछूं तुम्हारे अंदर कितने बैक्टीरिया हैं? मिलियंस। यानी कि ये तो आपने मैं क्वांटिटी में पूछ रहा हूँ, ये आपने क्वालिटी बताई है, इनकी मिलियंस वैसे आइडेंटिफिकेशन वाला पार्ट बताया। मैं वेट बाई वेट जो मैं बताता हूँ, लगभग 24 किलोग्राम वेट मीन्स 1 किलो बैक्टीरिया, ठीक है ना? तो जैसे मैंने अपने अंदर 4 किलोग्राम बताए, तो उस हिसाब से बताएंगे, कैलकुलेशन है, जनरल कैलकुलेशन। और देखो कुछ भी खाते हैं तो उसी तरीके से लगभग 2 से 2 किलोग्राम बैक्टीरिया आपके अंदर हो सकते हैं। क्योंकि लड़कियां तो बाबा स्लिम ट्रिम रहती हैं, बाबा बढ़ने नहीं बढ़ाती है बिल्कुल भी, ठीक है? तो बेटे ये हमारे अंदर बैक्टीरिया वो क्या करते हैं? सेग्रीगेशन। क्या करते हैं बच्चों? सेग्रीगेशन। मीठा अलग फेंकते हैं, खट्टा अलग फेंकते हैं यार, और हमारी बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स देते हैं। तो मुंह किसको लगती है? बैक्टीरिया को। जब उनको मुंह लगती है ना, तभी कहते हैं ना पेट में कुछ तो दो खाने को, है ना? बड़ा अजीब सा लगता है, कुछ खाना चाहिए, जरूर खाने को होना चाहिए। तो किसको? बैक्टीरिया को मुंह लगती है। इसीलिए हमारी जो जड़ें होती है ना, जड़ों के नीचे जो बैक्टीरिया होते हैं उनको मीठा कौन देता है? पत्ती, लीफ। कौन देता है? लीफ। और अगर हम नंबर ऑफ लीफ बढ़ा दें पौधे में तो फूट ज़्यादा बन जाएगा, बनेगा या नहीं? तो देखो सिंपल साइंस को लेकर के हम फार्मर्स के उसमें क्या बदलाव नहीं कर सकते? अब आते हैं मेडिसिनल प्लांट। तो अब मैं जल्दी जल्दी करूँगा। ये रिसर्च कैसे करते हैं ये समझ गए ना, कैसे पेपर बनाते हैं ये समझ गए? तो ये बहुत सारे पेपर्स, हमने इतने पेपर बनाए, 2-3 साल में 100-150 पेपर पब्लिश कर दिए, और 3-4 हज़ार साइटेशन भी है। तो मेरा कहने का मीन से, और किसका बेटा हूँ मैं? गरीब मजदूर का, किसान का। तो एक गरीब मजदूर किसान का बेटा एक कर सकता है, तुम तो बहुत आगे हो रहे बाबा, मैं तो IAS PCS बन जाना है आगे चल के, तो कभी भी पीछे नहीं हटना है, ठीक है ना? जब मैं इतना पूरा परिवार से होकर, पूरा फैमिली से होकर के यहाँ तक जा सकता हूँ, तो आप और आगे जा सकते हो। मेरा कहने का मीन्स ये है, हम कम नहीं हैं, हम कम नहीं हैं, वी कैन डू। तो अब आगे देखेंगे कि और लोगों ने जो पेपर बनाए, जैसे ये और लोगों के हैं, देखो इसका जिस्ट थोड़ा कमज़ोर है। आप देखो मेरा जिस्ट कितना स्ट्रांग था, इसका कमज़ोर है, तो कमज़ोर पेपर, कमज़ोर जर्नल में पब्लिश हुआ। उसके साइटेशन नहीं है, उसको कोई फिर साइट नहीं करता, उसको कोई पढ़ता नहीं है। तो जब भी कोई पेपर हम लिखते हैं तो उसकी पूरी रामायण से लेकर महाभारत तक लिखनी होती है, हर चीज़ उसमें कवर होनी चाहिए, उसमें कोई लूप होल्स नहीं रहना चाहिए। तो इसीलिए उसके बाद में ही फॉर्मुलेशंस बनते हैं, उसके बाद में फॉर्मुलेशंस बनते हैं, उसकी मेडिसिन्स भी बन सकती है, वो फ्यूचर्स में भी इस्तेमाल हो सकता है, उसके बेसिस पे ही आपको प्राइज़ और अवार्ड्स मिलते हैं बच्चों। तो ये बहुत सारे जिस्ट हैं लोगों ने बनाए, उनके पेपर्स हैं, ये भी जिस्ट है, ये भी जिस्ट है, ये और लोगों ने बनाए। तो मैंने अपने भी दिखाए आपको, ये भी दिखाए, उनमें अंतर है ना। तो अभी खैर ये तो मुझे, जब मैं अच्छा चांगला काम करता हूँ रे बाबा, तो सब चांगला चांगला होता है। तो ये कुछ चांगला हो रखा है, हैं कुछ अच्छा हो रखा है। तो मेरा कहने का मीन से आप भी अच्छा करोगे तो आपके भी साथ सब कुछ अच्छा ही होगा।
तो हार्ड वर्क हमेशा पे करता है, हार्ड वर्क हमेशा पे करता है। अब बात आती है, ये आपका सब्जेक्ट से थोड़ा सा, मेडिसिनल पौधे। तो कितने तरह के मेडिसिनल पौधे हैं हमारे देश में? लगभग 6000 तरह के या इससे ज़्यादा तरह के पौधे हैं ना मेडिसिनल, मैंने वही बताया था ना। और पूरे हमारे देश में कितने तरह के पौधे हैं? 18,700 तरह के पेड़ पौधे। पेड़ कितने तरह के हैं? लगभग 2200 तरह के पेड़ पौधे हैं। जैसे 10 पेड़ों के नाम बताओ अब आप कहोगे सर मेरे पीछे पड़ गए, हमने तो मुझे क्या नहीं करते। हाँ बताओ बेटा। हाँ जैसे नीम है, हाँ नीम, बरगद, बोलो, पीपल, बबूल। तुम मराठी में बोलो ना बाबा, मैं सब समझूंगा और सब बताऊंगा। हैं? आंवला, आम, अभी 6 भी नहीं है बाबा। हैं? हाँ हाँ, पेरू, सीताफल, रामफल, 4 में 8 9 हो गए। एक बार बताओ। चीकू, वो भी पेड़ में आता है, पेड़ है 5 मीटर से ऊपर होता है। तो आपने देखो 10 पेड़ बताए बेटे, आप सच बोलना, आप कहाँ रहते हो? जहाँ रहते हो वहाँ 100 लोगों को जानती हो? उनका चेहरा देख करके पहचान लोगे? सच? जब तुम वहाँ जहाँ रहती हो 100 लोगों को पहचान लेते हो, तुमने अब तक कितने तरह के पेड़ पौधे देखे होंगे? और 10 बताने में हवा निकल गई जब आप। तो बेटे मैं बहुत इंपॉर्टेंट साइंस बताने जा रहा हूँ। जब भी किसी पेड़ को देखते हैं तो उसका नाम वो किस काम आता है, क्योंकि वी बिलोंग्स टू द फार्मास्यूटिकल्स, वी बिलोंग टू द फार्माकोलॉजी, वी शुड नो ईच एंड एवरी टाइप्स ऑफ द प्लांट्स। अगर हम पेड़ पौधों को जानते हैं तो दवा को जानना, दवा के फॉर्मुलेशन करना बाएं हाथ का काम। क्यों? इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं बताई? तो आज जब जिससे भी रास्ते से निकलोगे तो ये देखोगे यार अगर कोई नया पेड़ मिल गया तो मुझे वो याद जरूर करना है, वरना सर नहीं छोड़ेगा मेरे, वरना मैं दिखाई दूंगा तो मैं वो भूत की तरह ये तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं बता रहा। तो जैसे नीम है, तो आपने कहा नीम, तो नीम किस काम आता है? मुझे कोई बताएगा? खुल के बताओ। एजा डायरेक्शन निकलता है उससे, एक चीज़ और हजारों काम आता है। उसकी लीव जब सूख जाती है तो प्रेस करके उनका केक बना दिया जाता है, 10 रुपये किलो बिकती है। तो उसके फॉर्मुलेशन से इम्पॉर्टेंट है। एक इंसेक्टिसाइड्स की तरह भी लोग डालते हैं, तो मेडिसिन में भी यूज़ होता है नीम ऑयल। बहुत सारी मेडिसिन बनाई जाती हैं बच्चों। तो हमें, और किससे बनाई जाती हैं ये सब चीज़ें? हमारे नीम से। किससे बनाई जाती हैं? माझी नीम से। बाबा माझी नीम से, हमारे नीम से। और बनाता कौन है? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लोग, जो सिर्फ देख लेते हैं हाँ भाई यही नीम है, लाओ 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 लाओ, क्योंकि वे लोग क्या जानते हैं? वो फॉर्मुलेशन, वो या तो फॉर्मुलेशन खरीद लेते हैं या फिर डेवलप कर लेते हैं। तो हमारे रिसोर्स को कोई तीसरा आदमी यूज करे, व्हाई वी कैन नॉट डू? वी कैन डू, वी कैन डू, वी कैन डू, वी कैन डू। तो कितने तरह के पेड़ पौधे हैं? 18,700 तरह के पेड़ पौधे। जंगल कितना है हमारे देश में? 72 मिलियन हेक्टेयर। कितना है? 21.03% है जंगल, ठीक है। और खेती की जमीन कितनी है? 157 मिलियन हेक्टेयर। टोटल जमीन कितनी है? 329 मिलियन हेक्टेयर। माझी महाराष्ट्र की जमीन कितनी है? 30.77 मिलियन हेक्टेयर। 1 मिलियन हेक्टेयर में कितने होते हैं? 10 लाख हेक्टेयर, ठीक है। अब मैं पूछता हूँ, हम सब मोस्टली विदर्भ के हैं। विदर्भा में कितने जिले हैं रे बाबा? भूख लग रही हो तो मैं छोड़ दूंगा अभी। हैं? कितने हैं? 11 जिले हैं। विदर्भा में कितने जिले हैं? कितने डिवीजन हैं? 2। पहला डिवीजन बैठ सकता, हाँ पहला डिवीजन कौन सा है? नागपुर। अब नागपुर से ही चलते हैं। अब देखो मैं तुम्हारे घर का एरिया बताने वाला हूँ, ध्यान रखना। जहाँ की भी आपको घर बता दूंगा, कितने एरिया में घर है, कितनी जमीन है वहाँ। नागपुर डिवीजन है। नागपुर डिवीजन में कितने जिले हैं? 6। एरिया है 4.6 मिलियन हेक्टेयर। तो 6 जो जिले हैं नागपुर से इधर चले भंडारा, भंडारा से उधर चले गोंदिया, गोंदिया से आगे चले ये क्या चंद्रपुर, और चंद्रपुर से आगे गढ़चिरौली। कितने हो गए? 5 हो गए। और एक इधर की तरफ जाएंगे वर्धा। यही 6 हैं? हो गए 6 जिले। अब आ जाते हैं, दूसरा है अमरावती डिवीजन, उसमें कितने बचे? 5। तो अमरावती 1 हो गया,
अमरावती से थोड़ा सा उधर चले तो क्या मिलेगा, यवतमाल रे बाबा, और यवतमाल के उधर चले तो क्या मिलेगा, अकोला रे बाबा, अकोला के बराबर में बुल्ढाना, बुल्ढाना के बराबर में वासिम, तो कितने हो गए 5। वासिम अकोला, वासिम अकोला, बुल्ढाना, यवतमाल और अमरावती कितने हो गए 5। तो कितने जिले हैं रे बाबा 11। किसमें, अपने विदर्भा में, माझी विदर्भा में। और मेरे महाराष्ट्र में कितने हैं बाबा, माझी महाराष्ट्र में 36 डिस्ट्रिक्ट है। कितनी जमीन है 30.77 मिलियन हेक्टेयर। कितनी जमीन है 30.77 मिलियन हेक्टेयर। और मेरे महाराष्ट्र में कितने तरह के मेडिसिनल प्लांट हैं और कितनी तरह की दवाएं बनाई जाती हैं, कौन कौन सी इंडस्ट्री कहाँ कहाँ, कौन कौन से जिले, कौन कौन सी तहसील में, इतना मैं बता रहा हूँ। जैसे मेरे विदर्भा में 13,558 गाँव हैं। कितने हैं गाँव, कितने जिलों में 11 जिले में, ठीक है। और जमीन कितनी, आप टोटल 9.7 मिलियन हेक्टेयर एरिया। कितना है 9.7 मिलियन हेक्टेयर एरिया। कितने जिले में 11 में। और विदर्भा में कितने जिले हैं 11। और कितने डिवीजन है 2, 6 नागपुर में, 5 यहाँ। अब मेरे विदर्भा में कितने मेडिसिनल पौधे हैं, देखो तुमने बताया मुझे गाँव 13,558 है, एरिया 9.7 मिलियन हेक्टेयर है। और आपने मुझे भी बताया कि 11 जिले हैं, नागपुर में 6 हैं, भंडारा ये अमरावती में 5 हैं। सब कुछ बता दिए, गाँव के नाम गाँव में बता दिए। अब नागपुर में भी आपने मुझे बताया था 1617 गाँव में, 11 से 51 विलेज पंचायत है, 14 तहसील है नागपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना। अब बताओ बाबा कितने मेडिसिनल प्लांट हैं, क्योंकि आप बी फार्मा कर रहे हो या डिप्लोमा, बी फार्मा वाले हो ना, बताने पहले तो जाने नहीं दूंगा, जब भी खत्म करूंगा तो मैं ये बताने पड़ेंगे बाबा मेडिसिनल प्लांट कौन से हैं और कौन कौन से प्लांट से कितनी मेडिसिन कितनी बनती हैं और कितनी इंडस्ट्री है मेडिसिनल की, कौन कौन हमको ले सकती है। बी फार्मा के बाद में हमारा फ्यूचर क्या है, हमको कौन अपटेक करने वाला है रे बाबा, कौन सी ड्रेस हम पहनने वाले हैं, कौन सा चश्मा लगाएंगे बी फार्मा करने के बाद, दैट इज इम्पोर्टेंट बेटा। बेटे यही मेरा फ्यूचर है, यही मुझे करना है। मेरे अपने रिसोर्स पता मुझे, मेरे महाराष्ट्र में मेरे कितने रिसोर्स हैं, मुझे कौन कौन अपटेक करेगा, मैं कहाँ, मुझे कौन कौन एब्जॉर्ब कर सकता है। मैं आगे चलकर बी फार्मा करने के बाद में किसी पे बोझ नहीं बनूँ, किसी का बोझ नहीं बनूँ, मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊँ। या डिप्लोमा करने के बाद में मुझे इंडिपेंडेंट बनना है, सक्षम बनना है और ऐसा बनना है, अपने कॉलेज का नहीं अपने लोगों का भी नाम करना है, अपने गुरुओं अपने कॉलेज का नहीं अपने माँ बाप का नाम भी रोशन करना है। मैं अपने मेरे नाम से मेरे माँ बाप जाने जाने चाहिए, मेरे नाम से मेरे माँ बाप जाने जाने चाहिए, ऐसा मुझे बनना है। वही बेटे रिसर्च है, वही टारगेट है। अभी आपका टारगेट क्या है, बी फार्मा अच्छे से बेस्ट वे में कंप्लीट करना, यही टारगेट है। एवरीवन हैव दिस टारगेट। नाउ कम टू द मेडिसिनल प्लांट। अभी मैं पूछ रहा हूँ मेडिसिनल प्लांट कितने हैं विदर्भा में, बताने पड़ेंगे। 417 तरह के मेडिसिनल प्लांट ऐसे हैं जो कॉमर्शियल यूज होता है। 417 तरह के मेडिसिनल प्लांट ऐसे हैं जिनका कॉमर्शियल यूज होता है हमारे विदर्भा में। कितने, और उनमें क्या क्या रिसर्च हुई है वो बता सकते हो। देखो एक और चीज़ कह रहा हूँ, रिकॉर्ड भी हो रहा होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, मुझे अंधा कर दो तुम, और कोई भी पौधा ले आओ, अगर मैं सुन के भी उसका नाम नहीं बता सका तो मैं वैज्ञानिक नहीं। और यही अभी मेरा ये बांध दो वाला, ये आँखों को, अगर मैं नहीं नाम बता सका तो मैं वैज्ञानिक नहीं, वरना कर आजमा के नहीं। बेटे मैं इसीलिए आपको ये चैलेंज दे रहा हूँ क्योंकि दैट पार्ट आई कैन डू, बट you have to do your part, you have to do your part. So now all you will do your part, now all you will do your part, because your future is very bright, your future is very bright. मेरे पास समय नहीं है, वरना मैं और भी आपको पढ़ाता, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी रिसर्च हैं। ये प्रेजेंटेशन बेटे ले लेना, राष्ट्रपति को भी मैंने बुला रखा है, बहुत सारे चांगला चांगला काम कर रखे हैं रे बाबा अपने विदर्भा के लिए। आगे मेडिसिनल प्लांट से कौन कौन सी मेडिसिन किससे बनती है, क्या क्या फॉर्मुलेशन कर रहा है, डेवलपमेंट कौन कौन सी रिसर्च बाकी है, किस किस चीज़ पर हम रिसर्च कर सकते हैं, ये पार्ट के लिए थोड़ा सा समय चाहिए। मैं भी थक जाता हूँ बोलते बोलते ना, तो
अभी देखो ये सब प्रेजेंटेशन में बेटे कुछ छोड़ करके जा रहा हूँ जनरल, तो इसमें लगभग 400 तरह के पौधे हैं। कितने तरह के पौधे हैं रे बाबा? अब मैं कुछ आपको टिप्स और दे करके जाता हूँ, उसके कोई बिजनेसमैन बनी जाए मेरे टिप्स दे करके। कुछ बिजनेस करने की ज़रूरत है। डेली यूज मेडिसिनल प्लांट, कोई भी ऑनलाइन बिजनेस कर सकता है इस पर। ही विल बी 100%, आई एम 100% श्योर ही विल बी सक्सेस। डेली यूज मेडिसिनल प्लांट ऑनलाइन बिजनेस नागपुर में। नागपुर की पॉपुलेशन कितनी है? 30 लाख। 30 लाख में 6 लाख ऐसे हैं जो ऑनलाइन ही कर रहे हैं और सब कुछ खा पी भी रहे हैं। जोमेटो दे, ये दे दे, ये ले बस दे, तो ये सब कर रहे हैं। तो ये ऑनलाइन बिजनेस में 6 लाख लोगों में हम डेली मेडिसिनल प्लांट करा सकते हैं? नहीं, क्योंकि पूरे दिन तो वो काम करता है, छुट्टी मंजिल पर रहता है। और डेली मेडिसिन प्लांट अगर रात को उसका मन कराया 2 पत्ती डाल के इसकी चाय पी है, डेली मेडिसिन प्लांट में खरीदा था। अच्छा बिजनेस बताया टाइटल, डेली यूज ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग प्लांट, डेली यूज इंडोर प्लांट, डेली यूज आउटडोर प्लांट, डेली यूज ऑर्नामेंटल प्लांट। इस तरीके के छोटे छोटे बिजनेस हैं, छोटे छोटे काम हैं, छोटी छोटी रिसर्च है, और छोटी छोटी रिसर्च के बेसिस पर आगे बढ़ा जा सकता है। बहुत सारे प्लांट्स हैं, एक ही पौधे का नाम लूँगा, 417 तो नहीं बताऊँगा। इंसुलिन का नाम सुना है ना बाबा? अमेजन का क्या रुपये का है? 150 से 200 250 रुपये तक का है। 25 पैसे के पौधे को अमेजन 250 रुपये देता है बाबा। इसके पौधे को माझी पौधे, हमारे पौधे को रे बाबा, इसके पौधे को, हमारे पौधे को। और हम फार्मास्यूटिकल्स के आदमी हैं बाबा, हम इस फील्ड के आदमी हैं। हम पेड़ पौधा किसके हैं? हमारे। पेड़ पौधा किसके हैं? हमारे। और दूसरा कोई रिसर्च कौन कर सकता है? हम करेंगे। वी विल डू, वी कैन डू, डेफिनेटली वी विल डू। तो ये इंसुलिन प्लांट जो वहाँ इसका है 25 पैसे में पौधा तैयार हो जाता है, तो नाउ यू कैन आल्सो डू। मैंने मल्टीप्लाइकेशन कैसे होता है सब कुछ दिया है इस पर। एक आमा हल्दी है, कौन कौन से प्लांट पे क्या रिसर्च हुई है वो भी आप सब ले लेना प्रेजेंटेशन, मुझ पर उतना समय नहीं है, मैं भी थक गया, आप 1.5 घंटा हो गया। ठीक है, थैंक यू। ठीक, सब कुछ चांगला लगा हैं? तुम भी भूखे हो? भूख तो नहीं लग रही? अच्छा कुछ पूछना हो तो पूछ लो, मैं भूल गया वो थैंक यू वाली स्लाइड ढूंढ रहा था, कहाँ गई? अरे बाबा, इस पे थैंक यू कह देते हैं। ये बहुत अच्छी साइंस है छोटे छोटे पौधों को लेकर के, बाद में बताऊंगा कभी रे बाबा। कुछ पूछना है किसी को भी खुले मन से? प्रेजेंटेशन समझ में आया? एक्चुअली लास्ट ईयर हमने सर का नेरी का कैंपस विजिट किया था और 4 बसेस लेके गए थे। लास्ट टाइम आई वाज इन मोडगरे कॉलेज, कोसराकोंडा, नियर बाय भंडारा डिस्ट्रिक्ट। तो वहाँ से हमने सर से बात की थी कि सर हमको फील्ड विजिट भी करना है, और साथ ही साथ हमने एक यूनिजूल का विजिट किया था। तो पहले सर के यहाँ विजिट किए, और नहीं सॉरी, पहले कंपनी गए थे, फिर उसके बाद सर के यहाँ आए थे। सर के यहाँ लंच वगैरह पूरा लेके आराम से कम 4 से 5 घंटे का विजिट था। और मैंगो की ही कम से कम नहीं तो भी सर ने 10 से 15 वैरायटीज बताई थी सिर्फ मैंगो की। और उसी तरह स्टीविया, नो डाउट, स्वीट प्लांट, कार्डमेक, बीटर, कड़वा बीटर, और ऐसे 2-4 और चीज़ें एक्स्ट्रा बताई थी जो मैंने खुद ने भी नहीं देखा। बीइंग फार्मा कोग्नोसिस में भी मतलब ठीक ठाक है मुझे भी नॉलेज, और मैंने भी बहुत सारे फील्ड सर्वे किए हैं, बट बहुत सारी वैरायटीज सर ने ऐसी बताई थी जो बहुत एकदम उसके जेन्यून और बहुत फास्ट इफेक्ट है। तो आगे इन फ्यूचर कभी होता है तो आप लोग भी अपने कॉलेज से विजिट डालिए, बहुत फायदेमंद होगा। कुछ क्वेश्चन कुछ सर से कुछ भी पूछना है? कुछ बिल्कुल मैम। एक तो खेती की जमीन पे कभी भी बैम्बू प्लांट नहीं करना है,
सबको सर्कुलेट कर दें, एटलीस्ट वो 417 तरह के प्लांट तो आप सीख ही जाओ। टोटल प्लांट कितने हैं? और विदर्भा में ज़मीन कितनी है? 9.7 मिलियन हेक्टेयर। देखो मैंने यही कोशिश करी कि जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको भी सिखा दूँ। मुझे आप तहसील भी पूछ सकते हो, कहाँ किस ज़िले में कितनी तहसीलें, चंद्रपुर में कितनी तहसीलें? ये गांव कितने हैं पूरे विदर्भा में? 13,558 गाँव बाबा। और कितने ज़िले हैं विदर्भा में? 11। नागपुर डिवीजन में कितने हैं? 6। नागपुर डिवीजन में 6 और 6, सॉरी हाँ 6 6 और अमरावती में कितने हैं? 5। टोटल 11 हो गए। नागपुर में गांव कितने हैं? नहीं, 1617 गांव हैं। और विलेज पंचायत कितनी है? कभी कभी दो गाँव को लेकर के एक विलेज पंचायत बनाई जाती है ना, तो 1151 विलेज पंचायतें हैं। तहसील कितनी है? 14। किस तहसील में कितनी लैंड है? जो नागपुर का एरिया, जो अर्बन नागपुर है, उसमें 20,000 हेक्टेयर एरिया, नागपुर अर्बन वाला एरिया जो जिसमें शहर बसा हुआ है, लगभग 20,101 हेक्टेयर एरिया। तो ऐसे कि हर तहसील में कितनी डिग्रेडेड लैंड है, कहाँ कितनी है, उसकी उसकी कैटेगराइजेशन क्या है, कैसी सॉइल है, वहाँ कितने मेडिसिन प्लांट प्राकृतिक रूप से होते हैं, उस तहसील में कौन कौन सी खेती हो रही हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और क्या और मेडिसिन प्लांट ग्रो कर सकते हैं, और कौन से फॉर्मुलेशंस वहाँ डेवलप कर सकते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट अभी सभी लोग कहीं ना कहीं कनेक्टेड है हर्बल से। ओवरऑल अगर हम मॉलिकुलर मॉडलिंग की बात करें, डॉकिंग की बात करें, या फिर और उस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, या 3D प्रिंटिंग से भी रिलेटेड, तो मोस्ट ऑफ द थिंग इज वी विल सी कि भाई ज़्यादातर लोग कहीं ना कहीं कनेक्टेड है हर्बल से। इवन अगर हम नॉवल फॉर्मुलेशंस बना रहे हैं, NDDS कर रहे हैं, नॉवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, तो इन दैट केस द पीपल आर यूजिंग हर्बल्स। सो दैट कंसीडर वी विल कंसीडर एंड वी कॉल टू लाल सर, बिकॉज मैंने ज़्यादातर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में देखा, प्रॉब्लम होता है कि हम जितने बड़े इंस्टीट्यूट में जाते हैं उतना वहाँ पे लोग कम बोलते हैं और रिजर्व होते जाते हैं। टेक्निकली नो डाउट दे आर मोर साउंड, मोर स्ट्रांग, बट दे आर रिजर्व, और शेयरिंग में उनको थोड़ा सा हेजिटेशन रहता है। दे ट्राई टू हाइड इट, दे ट्राई टू, वी कैन से कि भाई उनका जो नॉलेज है वो कहीं भी बाहर नहीं जाना चाहिए। बाहर जाएगा तो लोग उसको कॉपी करेंगे, उस पर रिसर्च करेंगे, और भाई हमारा कहीं ना कहीं उसका भी लूप होल निकलेंगे। बट सर से मैं मिला तो सर ऐसे है कि सर नो डाउट फैकल्टी जो हमारे यहाँ के डिप्लोमा के डिग्री के बच्चे थे उनके भी कंधों पे हाथ रख के सर उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, बेटा तू चख, बेटा तू तोड़ उसको, बेटा तू खा उसको, बेटा तू समझ। तो ये सर का नेचर है। और इतने बड़े इंस्टीट्यूट में और इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट सर खुद पर्सनली एज अ प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैंडल कर रहे हैं, उसके बावजूद भी सर बहुत डाउन टू अर्थ है, और वो हमारे लिए सीखने वाली बात है। सो आई वॉन्ट टू क्लैप। किसी को और कोई क्वेश्चन कुछ? ठीक, मैम प्लीज। Sir, we are very honored that such an eminent personality has accepted our invitation and honored us with such great knowledgeable and detailed plenary session. Sir had shared so many important aspects regarding scientific writing and also shared description of so many flora and fauna. I request our principal, Dr. Mohammad Tawqir Sheikh sir, to please appreciate our resource person by felicitating with memento, certificate, shawl and shrifle. Please, sir.
बस, ठीक है सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और सभी को ये रिक्वेस्ट है, सभी इस प्रेजेंटेशन को प्रिंसिपल सर से रिक्वेस्ट करेंगे, सब प्रिंसिपल साहब आपको सर्कुलेट कर देंगे जिससे आप सीखो। मैं चाहता हूँ जितने ज़्यादा सीखोगे हमारी समस्याएं उतनी कम आएंगी, मेरी अपनी ये सोच है। और आस्पेक्ट ये रहना चाहिए हमारा कभी भी रिसर्च का कि उससे लोगों को और सोसाइटी को फ़ायदा हो। नो डाउट वी आर गोइंग फॉर द पेटेंट, वी आर गोइंग फॉर द आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, नो डाउट हमारा भी फ़ायदा होना चाहिए। हम भगवान को बोलते हैं कि भाई शुरुआत हमसे हो, लेकिन साथ ही साथ हमारे पास बाकी लोगों का भी फ़ायदा हो, है ना। तो प्रोजेक्ट्स उसी तरह से चूज़ करें कि जो लोगों के काम में आए। इवन अगर मैं बड़ी बात नहीं करूँगा, मेरा खुद का प्रोजेक्ट ऐसा था दैट वाज रिलेटेड फ्रॉम एक्चुअल फार्म टू फार्मेसी। मैंने खुद ने कल्टीवेट किए थे 5 से 6 प्लांट और बहुत बड़े एरिया में कल्टीवेट किए थे। कल्टीवेट करके कंपैरेटिव कल्टीवेशन किया था। योगिता मैम बहुत अच्छे से जानती हैं मुझे, मैम भी थी तब वहाँ पे। तो मैं खुद अपने पैंट को इतने ऊपर फोल्ड करता था और मेरे साथ में बहुत सारे सब सबॉर्डिनेट थे और सर ने, पीटरकर सर ने एक टीम दी थी मुझे। हम सब मिलके वहाँ पे कल्टीवेट करते थे। कल्टीवेट करने के बाद उसको फिर प्रॉपरली हार्वेस्टिंग करना, फिर उसको ड्राइंग करना, और वो ड्राइंग भी प्रॉपर एक टेक्निक फॉलो करके, कुछ लायोफिलाइजेशन टेक्निक, कुछ स्प्रे ड्राइंग, कुछ ऐसा 2-3 अलग अलग टेक्निक से मैंने ड्राइंग किया था। उसके बाद फिर उसका एक्सट्रैक्ट निकाल के, फिर उसके बाद उसके एक्सट्रैक्ट्स की एक्टिविटी एंड देन फाइनल फॉर्मुलेशंस। तो इस तरह मेरा फार्म टू फार्मा पूरा था प्रोजेक्ट। और वो जो क्रॉप थी वो इतनी ज़्यादा हुई थी कि मैंने लोगों को बाकायदा वहाँ से बांटता था। जैसे निकलते, जैसे उसमें था मेरे पास में करेला था, मेथी थी और तुलसी थी, तो मैं ऐसे पूरे बंच के बंच उसको कटिंग करके फिर लोगों को गिफ्ट करता था, क्योंकि वो बहुत सारा मुझे निकलता था। मेरी तुलसी की हाइट भी मेरे सर तक आती थी, तो सब बोलते थे कि सर आप घूम जाओगे उसमें। तो इतनी बड़ी तुलसी मैं खुद नहीं समझ पाया था कि इतनी कैसे कि इसकी ग्रोथ हो गई, बट मेरी हाइट तक की आती थी। और हर एक पत्ते को अगर आप देखोगे तो मैं, मेरा प्रोजेक्ट था इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लोग बोलते थे कि एक भी पूरे प्लांट में एक भी पत्ते पे ऐसा डैमेज नहीं था। वो इतना रिफाइंड ऐसा दिखता था कि सही में ये है डिफ्रेंशिएटेड, और हर एक सिंगल लीफ वेरी वेल फ्लोरिश्ड, और कहीं ऐसा कटिंग नहीं, कुछ नहीं। तो नो डाउट वो प्रोजेक्ट का बहुत सारा फिर फ़ायदा भी हुआ। वो उसको एक ऑर्गेनिक इंडिया कंपनी ने उसको हायर की, मेरे प्रोजेक्ट को फंडिंग भी दी मुझे, और वो प्रोजेक्ट को उन्होंने फर्दर यूटिलाइज़ किया उनके लिए। और नो डाउट मेरा जो प्रोजेक्ट था मेरे गाइड ने ही मुझे असाइन करे थे, लेकिन मुझे उसमें मज़ा आया, मुझे लगा कि नहीं ये करना चाहिए, इससे कहीं ना कहीं बेनिफिट है लोगों का। तो ज़्यादा अच्छा है कि हम ऐसे ही कुछ चूज़ करें। नो डाउट वो थोड़ा सा तकलीफ होती है, वो काम करने में वक्त लगता है, लेकिन होता है अच्छे से। चलिए, थैंक यू। अभी लंच के लिए हम ज्वाइन करते हैं आप लोग, फिर लंच के बाद पवन शाहने सर का सेशन है। I request all of you to please proceed for lunch. Sir has pursued Masters of Chirurgia in Plastic Surgery from Government Medical College, Baroda, Gujarat, MS University of Vadodara in December 2011. Sir has been worked as consultant surgeon and assistant professor for a year at Department of Surgery, GMC Nagpur from 2007 to 2008. Also, he worked as consultant surgeon and in charge in Dr. Batra's Aesthetic Solutions Private Limited, Ahmedabad Clinic for 2 years from 2012 to 2014. Sir worked as senior resident in Department of Plastic Surgery, NKPSI, MS and RC and Lata Mangeshkar Hospital, Nagpur from 2014 to 2018. Now Sir is providing services at Mayflower Cosmetic Surgery Clinic in Dhantoli, Nagpur, as well as a consultant plastic and reconstructive surgeon in various hospitals in Nagpur. Sir has his specializations in microvascular surgeries as well as free flap surgeries along with congenital anomalies, cosmetic surgeries, aesthetic surgeries, trauma, hand-related surgeries, burn conditions with oncosurgery and orthopedic surgeries.
Sir has had the privilege of publishing 7 papers and articles in reputed journals. Sir has participated in 8 conferences and have been actively engaged in 5 workshops. I would like to invite respected Principal Sir to felicitate Dr. Pavan Shahane Sir by floral bouquet. Thank you so much, sir. Now, I would request Dr. Pavan Shahane, sir, to please proceed to deliver his session. Please, sir. Thank you, Mohammad Takir, sir, Principal, sir. Is sufficient? My voice is audible, no? All is small. Okay, that's fine. And thank you, Apeksha ma'am, for so elaborate introduction. Okay, I'm a plastic surgeon. When we say plastic surgeon, means plastic means what? Actually, I like to start from the plastic, because when I came to Nagpur after completing my MCH and everything, from Ahmedabad to Nagpur, then in 2014 the problem I faced कि okay plastic, okay you use plastic, sir कौन सा plastic use करेंगे, कहाँ पे लगाएंगे, कहाँ चिपकाएंगे, तो plastic कुछ नहीं होता है, it is the surgery. Plastic ये शब्द है, it comes from Greek word mold, its meaning is shape or mold. So we change shape, we change the things, it's actually a broadly speaking a general surgery. From hairs to the toes, we operate everything all over the body. It's started with Sushruta, Maharshi Sushruta. He was the first plastic surgeon, and in World War II actually it developed more with Sir Harold Gillies. He used to operate lot of war injuries and other patients who were having requiring lot of reconstructive surgery. So today the topic is the 3D printing, how I use 3D printing, and also how I do my other surgeries also. I will try to describe you what can be done and what I am doing currently, because I think this session is about 3D printing. You already know how they are doing it. Workshop has been there yesterday, so you know how the 3D printing works. But what is the practical application, how it can be used, and how we started. Okay, I have been working with Abhijit. I take help of Abhijit for many other things also, and also for 3D printing. So this is the what is happening. In this presentation we will see how it is fascinating to incorporate 3D printing into our routine plastic surgery. So we can do many different things, and some things which are seemingly impossible, but with 3D printing it can be done very easily. Okay, so plastic surgery, it has 2 branches. What is plastic surgery? I have already explained this thing. This is surgical specialty focusing on the reconstructive and altering the human body. There are 2 main branches. One is reconstructive surgery. That means something is there that it is gone because of trauma, maybe because of cancer it has been operated, or maybe there are some congenital deformities. The child is born with the deformities, maybe facial asymmetry or nasal or chin asymmetry, something like that, and we will be reconstructing it. In case of cancers like oral cancers or breast cancers, the plastic surgery is required so as to reconstruct the face again to the normal function and for the normal appearance also. Another part of plastic surgery is cosmetic surgery, which is recently more and more evolving. So in cosmetic surgery, even the patient or the person who is otherwise normal, he don't have any disease or trauma or any disfigurement or anything, but he want to enhance it. So lot of surgical and non-surgical procedures are also there, which we do for this aesthetic correction. Traditional methods, what are there in plastic surgery?
mostly we rely on some manual planning. I will do, see, this is my actually acumen, because being a plastic surgeon, it doesn't mean ki you are just a surgeon. You have to be an artist. So I have to see the patient in 3D perspective and see what is the defect and what can be modified and how it can be make more beautiful or at least to the normal level. So most of the time we do manual planning like marking and all those things, assessing. We do x-rays and CT scans, and most of the time we do intraoperatively assessment also. Okay, I need this bone to be shaped like that, or this bone it should be like this, so it will give a normal contour and normal like that. Or sometimes we use some wax models. Previously I used to use in 2007 to 2009, when I was student in plastic surgery department in Baroda. We used to plan with wax. We used to take the wax candles which are easily available, and we carve those candles. Sometimes I use soap also, or sometimes we use POP models, and that plaster of Paris we carve it, we mold it, and we make the, okay, it should be like this, and this can be done like that. Okay. So we go on presentation, then you will come to know ki how the things are changing like that. So 3D printing, what we have introduced in 3D printing, it's a additive manufacturing process. Already the theory you people must have known, and you have seen the practical also. So in plastic surgery, 3D printing is utilized using the CT scan data. With CT scan we get DICOM images, and with the DICOM images we use the software for preparing the CAD/CAM images, and then we 3D print it. Okay, so we can have patient specific anatomic models. Okay, that patient he is having, we have done the CT scan, and I have prepared his bony structure, and even the soft tissue structures we can prepare, and then we can design or fabricate the custom surgical guides. Because during surgery, before surgery also, we need to do a lot of planning, and we need to do a lot of counseling also for the patient. A patient, how will trust me? Okay, doctor, you will be doing, and I will look like this or not. So he will ask me. So I need to have those models, and I can tell them, okay, this will, the changes, this is normally you with the 3D printing, and these are the changes we could be making. So we can also plan the implants. We use many titanium or stainless steel screws and plates to change the facial structures. So we can plan those plates, how those will be placed on the model, on the structure, 3D printed structures. And the same thing I have planned, I have prepared, patient is consulted properly, and then during surgery I will be saving my time, and just I have to do the process. So the planning is will take more time, but surgery will take very less time, and that is good for any surgery or any patient, because anesthesia time, surgery time, everything will be reduced, so the recovery will be good. So okay, we plan and we simulate the surgeries beforehand, so that I will be confident and patient will be also be confident. So there are different types. I have just categorized these things like that, because we can use that 3D printing for training purpose. Mostly I can train to my students. When I was in college, I used to do that for training my plastic surgery students. Okay, these are the model, I should be doing this, and this is the defect, what is your plan. So that for training purpose it can be used. For patient specific, for surgery, which I am using right now, is for pre-operative planning. Also in intraoperatively I need some tools. I had to plan what it should be. So I make the model, I prepare the implants accordingly, and I can use intraoperatively. Also for the patient's consent and education. So he should be confident with me, and he should give me the consent like that. Okay, so pre-operatively and intraoperative tools, we can use these three things. It can be just a guide, how it should be done, or how are the plates and templates, how I have to prepare. Or we can use just 3D print the processes or mold also. If some bone is lacking over here, or because of trauma, or because of some injury, or because of some cancer, the bone has been removed, I have to prepare this bone. I have to transplant this bone to the patient. What we are doing right now, we will be taking out the fibula. That is, the fibula is the second bone from your leg.
it's a thin bone. We have two bones in our leg. I take out the bone and I transfer that bone to the jawline, and that live bone we attach the vessels, blood vessels, and the bone is usually live, and we place it here. We cut it as per requirement, because mandible is as the angles, na? Here the angle is there, this angle is there. The bone I got is a straight piece, so I have to mold it, and I have to make a shape of proper jawline, so the face should look normal, as good as the previously he was having, like that. So we will go on saying, okay, so the applications of 3D printing in reconstructive surgery, and again we will see the cosmetic surgery. In craniofacial reconstruction, like creating custom implants for facial reconstruction after trauma, accidents or congenital defects. Some kids, they are born with some deformities. Their chin might not be developed properly, or their brain, that is skull is not developed properly. So in those patients, we need to plan it properly, how we will be shifting the bone and how will be changing the bone structures, and we can use 3D printing for that. Okay, in breast reconstruction, designing patient-specific prostheses for post-mastectomy reconstruction. For a patient of CA breast has been operated, that mastectomy has been done, breast has been removed, it will definitely alter her self-confidence and also the dressings. So we need to reconstruct that breast. We usually use silicone breast implants. We also use some muscle flaps, or from back we use some fat and skin flap, so as to reconstruct the breast again. So with 3D reconstruction, I will be having the shape of the another breast, and I have to mimic that shape here. So I will be using the mirror technique over here. You must have known that mirror technique also. Yeah. So with the bone reconstruction, also fabricating implants to repair and replace the damaged missing bones. In these images, you can see that mandible, because of the cancer, that mandible has been removed from here. In the lowermost image, that part has to be reconstructed so that the contour will be same. So with 3D printing, we have the mirror image of the other side, which is normal side, and we contoured, okay, what is remaining will be has to be fabricated here. So before surgery only we will have that bone. So in this place I can that one that is actually bone remolded. Actually it's a real bone. With some 3D printing machines we can create bone, that is biocompatible, it can be placed inside. It is not available in Nagpur at present, so I am not able to do that. I will show you one patient that requires that thing. Another thing, we can use that, this is a common procedure. Okay, patient is having craniotomy, he is having head injury, and because of that bone is damaged, so damaged that it cannot be repaired, and he is having also intracranial bleeding and brain damage. So we need to recover that. The neurosurgeon, what he will do, he will remove the bone. The defect will be created. Just imagine a patient with a defect has been created, and there is no bone, just skin cover is there and just the soft brain. So it is prone to injury. Something if struck to his brain, there is no protection, and it doesn't look good. So that need to be corrected. Usually we do surgeries after 6 months, so as to make that contour properly and protect also. Usually in some of the patients, if the bone has been removed, if the bone is intact, we keep in the abdominal cavity or somewhere outside in a sterile medium, and then we will replace that same bone. But sometimes the bone is so much damaged that we cannot have that small pieces and make the complete the jigsaw puzzle and make the complete bone. So in that case 3D printing is actually required. At present, when 3D printing is not, someone is not using, what they will be doing, they are using ready-made mesh. Ready-made contoured mesh will be available. These are not customized to the patient's defect, because every patient will have a different defects, and something different is required. So they will be using this simple generic mesh and covering it. It won't give that much cosmetic effect. Some protection will be there, but that much cosmetic effect won't be there. So with 3D printing, I will be customizing that model how it is required, and a perfect contour, perfect shape can be achieved. In cosmetic surgery, designing the custom chin, cheek and jaw implants.
I had I have been doing this. I will show you the photographs. Then for surgical planning, like creating 3D models for pre-surgical visualization and patient education. Okay. In liposuction also sometimes we use 3D printing. Okay, how the fat will be transferred. Fat transfer we can use. Liposuction is a surgery in which I remove the fat. If someone is having a big belly or big maybe excess fat on the thighs or humps like that, so I will be doing liposuction. It's a surgical procedure. We just put a cannula, make hole, and suck out the fat. That fat which has been removed, some of the fat we can filter it and we can reintroduce into our body. So where there is fat is lagging, we can increase the fat like that. If someone is having like face like this, he want it to be filled, not he doesn't like only last week only I had done a patient. He was a policeman with rigorous training. He has gone to lost almost all his fat, and he was like that, and his marriage is due in maybe 2-3 months. So he has the urgency. Okay, sir, I need some fat here. My photographs are not coming good. The girl might reject me. Okay, so I need to have some fat somewhere to for the liposuction. Other person's fat won't be take up, so I have to have some fat so that I can put some fat over here. So on his belly I get some fat. So just we harvested around 100 ml, and from that 100 ml I just inserted 15 ml on both the cheeks. His cheeks are full. He is happy now. So with this can be done with the help of 3D modeling. So I will exactly know how much fat I have to instill. But with a lack of time and with lack of fund, because all these things will require some time for 3D printing, CT scan and all those things, and also money. So because of that concern, just I go on installing. I have to see intraoperatively, okay, I will be injecting fat, and okay, is this looking good? 15 ml on both the sides. I have to take help of my other colleagues in the operation theater. They will tell me, okay sir, stop here, this is good, don't do more. Then I have to stop like that. So with 3D printing, it will be precise, na, how much fat I have to instill. So I will be ready for that. Okay, benefits of, again, what are the benefits? That improved surgical planning. It allows surgeon to rehearse the procedure. I can rehearse, I can practice, so I will be more confident for the surgery. And it also enables better communications and decision making with the patients, because patients should be knowing na, how much fat and what will be the result. They always ask me, okay sir, आप कर तो लोगे लेकिन क्या दिखेगा, कैसा दिखेगा, मुझे बताओ कैसा दिखेगा, मेरा नाक, मेरा चिन कैसा दिखेगा. Otherwise, if there is some discrepancy, I have done something, and if patient doesn't like it, so it can cause some problem afterwards na, with the patient and the me. So these are the benefits. Improved patient outcome. So with a discussion I can have a better outcome also. Potential of reduced blood loss and shorter recovery times, because I will be doing the precise cutting and precise placement, and just I will come out of the surgery. I won't be doing or struggling during the surgery, because my plan is already made before surgery only. So it increases the accuracy of implant placement. Here in the image you can see how that it is fabricated properly, and that mesh is covering the skull bone. Okay, it enhances aesthetic and functional results also, because ultimately the outcome will be nice. So this is my patient I have operated in. You can see that the 3D printed models I have printed with the help of Avijit. Then what I had came to discussion with, he is the same patient with the skull bone, and we plan okay, chin, he need a bigger chin. That should be coming, because in the previous photograph you can see the chin is round, it is very short, and his angles are also not prominent, it is going down like that. So he wanted to improve his facial aesthetics. This is typically cosmetic surgery. He has been undergone 2-3 surgeries before for facial trauma. He had previously accidents, road traffic accidents. Maybe 3 times he had accidents, and every time some bones are fractured, he has to repair that. And now he want a change of the look. So we planned that green and white that I have used is a simple Play-Doh clay. It can also be used planned with 3D printing and customized properly. But here I have used clay.
I modified the clay and with the patient's discussion ki how much centimeter millimeter that augmentation is required, we planned it, and it is now easy for me to customize the implants. I have made a silicone implants with those same clay models, similar implants, and intraoperatively just I have to place the implants and I have to close it. So you can see the facial aesthetics has been totally changed. Same patient before and after. Another patient, he lot many other things also I have done. You can see the chin as the shape has been changed. Chin, we have cut down the bone and we just take down the bone downwards, but still the chin is curved. But he wants, what we discussed, he wants okay sir, my chin should be a rectangular chin. If I cut the bone and make it down, it will be still round. How it can be rectangle? But usually patients give me such things, okay sir, I want this, you have to do this, think over it. So I started thinking, okay, 3D printing again. Okay, I will make customized silicone implants so that it will be square shape. Again, that angle is also not prominent, so I have to make some implants for the angle. Buccal fat I have removed because this fat he doesn't want it, that his face is chubby initially, so he wanted it to be like this. So I have to remove that buccal fat. We have removed the buccal fat. Simultaneously, cheeks are, you can see the cheek is also depressed over here in the previous photograph. So cheek has to be augmented so that it will give an aesthetic look. Simultaneously, nose is depressed. I elevated the nose also in his case. This was a difficult case. Actually, he is my previous patient. He was bald. So I have done hair transplantation. You can see nice hairs over his scalp there. But then he discussed with me, okay sir, my facial asymmetry is there. You have been doing all these facial surgical procedures. He knows my other patients also. I have shown them photographs. Okay, we are already doing this. So my chin is deviated. Can you help me out here? Okay, we decided, okay, we should do it. And this is the 3D printed mandible over here. I get done that mandible, 3D printed mandible with resin material. I think this is resin material. Previously, Abhijit used PLA. So with resin, the contour will be nice actually. And here we need perfection because deviation is not that much. Here, just millimeter of surgical procedure will change the outcome. So I have get done this mandible printed, and in those pictures you can see deviation is there. That center of the chin is deviated. So I have to contour. I have to chin remove the excess bone from here. So the midline should be medially, and again some deficiency is there on this other side. So that deficiency has to be corrected with maybe silicone implants like that. So we planned accordingly. I have prefabricated everything. Though during surgery, it was just a 1 hour surgery. I opened it from the intraoral incision, cut out the bone, placed that silicone chip, and just closed it. And surgical outcome, you can see that deformity has been corrected there. Another patient here, I had just augmented chin. He just wanted a bigger chin, so I get 3D printed, then make the silicone implant as per his requirement, and just it's a simple surgery for me to do. The facial aesthetics, the proportions, what we say when facial aesthetics, in the first picture also you can see okay, he is looking good, but when we see the proportion of the forehead, the nose and the chin, if that chin, these three are equal, it gives a good look. If the chin is bigger in male, it will look good. In female, you usually keep the proportion. Here rhinoplasty patients, these are the before and after. Her nose is good, but she just want concern ki my nose is longer in the first photograph, so I have to reduce the height. How much I have to reduce? How much will look good? A plastic model, I can cut it, I can shape it, and the patient will be happy. Okay sir, this is good, you do like that. So it easy, prefabrication, consultation is easy, and then surgery is easy for me. I know exactly how much millimeter I have to cut. So I removed the excess bone from here, and the length, I reduce the length.
in the first, it looks good actually. Why it is looking good? Because that angle actually, nasolabial angle, it is the important thing here. In male, if it is the angle is narrow, then still it will look good. Or if it is in 90 degrees, it will look good. But if in a female the nose is getting deeper and the angle is narrow, it gives not that good look. You can see in the picture also. So I have just reduced the angle to 90 degrees. A bigger angle is also good in females. Some females like that, because you can see the examples like Sandra Bullock and some lot of actresses are there. In another patient, we customized the silicone implants and elevated the nose, because nose is broad. I have to make the bone narrow. The nose should be narrow and it should be elevated. And some defattening and other procedures are also been done. Another patient. See, I have not done only rhinoplasty over here. I have done rhinoplasty simultaneously with the 3D printing and with some imagination. I can guess ki there her maxilla is also backside. This is the maxilla bone. It has been retruded. The nose, the lips are in the first photograph. You can see the denture is coming forward. The lips are coming forward, but this maxilla bone is retracted. I have to augment this thing also simultaneously, nose and the cheeks. So another patient of rhinoplasty, male patient with a broad nose, simple nasal augmentation. In her case, I have done a lot of things. Another rhinoplasty patient, that one is the before patient, before surgery procedure. I have operated him once only, but he has been operated for the same nose maybe two times by same surgeon. Still you can see the nose is not proper. It is depressed over here and it is deviated also. The cartilage what the other surgeon put, it was deviated because he was not having proper planning. So this time I was fully prepared with the plan, how I will be doing it and how much I will be doing it in millimeter and millimeter. So with this, I think he is happy with that. Another patient, same rhinoplasty, two patients. Depressed nose, I have elevated the nose over here. In her case also, these are my two patients. The first patient, I have just done the rhinoplasty with the maxilla augmentation. You can see the smile is also has improved in her case, because the lips are initially they are protruding and the nose is set back. But with the maxilla augmentation also, the facial contour side profile is also improved. Another patient over here, her nose is a little bit bulky, broad, and some curvature is there. I have to correct that curvature and remove the fat. Another patient for chin and jawline angle augmentation. Simultaneously, I reduce the fat from here, and a proper aesthetic we can achieve. The same patient previously I have shown for the rhinoplasty. Then her chin was small, so we planned कि okay, chin and jawline is not proper. It is just 90 degrees over here. And in girls, if it is a triangular shape, if it is coming down, it will look good. So we planned accordingly. I planned कि how much bone I have to reduce and how much bone I have to elongate over here on the chin. And with the planning, we can achieve these results. So what are the challenges and future direction for 3D printing in plastic surgery? Okay, cost and accessibility of 3D printing technology. Actually, cost should be minimum. It is always the desire कि यार surgery भी सस्ते में हो जाए, printing भी सस्ते में हो जाए. So that is but still in Nagpur the charges are not that much. Okay, regulatory requirements and the standardization of the process, because I have been doing it. I have to do some calculations, and always there is I have to do, or some errors are there, I have to correct it, and then I have to improvise like that. And what is the lacking? I think we can do the planning, but I am not able to, or I'm not getting that biocompatible implants where a bone should be printed. In European countries, they are printing the bones also, or any polyethylene is also biocompatible. Biopore is a American company. They are making implants with this biopore.
Those are porous polyethylene that implants. So those implants, they can be kept inside. That those are FDA approved. Those can be inside, put inside in your face, and can be left like that. So that needs to be improvised. Till now, I am not able to help him. He is a patient. He has been operated for maxillary cancer. He had cancer over here. That cancer, he just ignored the cancer. He tried to, okay, the first, when he was diagnosed, surgeon told him, ki, okay, it need to be operated. The maxilla will be totally gone. He was shocked. Ki, okay, I should do, before surgery, I should try something else, like homeopathy or maybe Ayurvedic or like that. He went to those specialties for cancer. Actually, it's difficult. Surgery is the best thing, or otherwise we should follow the modern medicine, not Ayurvedic or homeopathic. Otherwise, in other specialty, other diseases, sometimes I advise to go for homeopathy or Ayurvedic also, but with the limitations. For cancer, actually, it is difficult. So that cancer then spread from maxilla to the orbit, and the complete jaw is involved, the upper jaw. So when he was operated, and it was extended to the brain actually, then it was spreading inside, so it was extended to the brain. So one neurosurgeon, one oncosurgeon, they both operated him, removed that total teeth, alveolus, maxilla, orbit, his eye globe, and all those things till the base of the skull. They removed everything, but they preserved the skin, and then just with the skin they covered the everything. Now he need to undergo radiotherapy and chemotherapy because of the small extensions of that cancer. But he is a bank manager. He used to be a bank manager. So well educated, smart looking. Previous photographs, I am not having his previous photograph before cancer photographs, but he was very handsome. And now he come to me, okay, these are my photographs, sir, and this is me. Can you improve me? I need biocompatible implants over here, so I can just mirror what is he is having on the other side, and the same with 3D printing we made for the other side, and that processes we can implant on the inside. Otherwise, what are the options? I will be having that fibula bone from here. I will be making that and cutting the bone and making it, but it won't be that much to the normalcy. I can make some bone over here, but that still not to that level. So this is patient is waiting for me. He need to complete his radiotherapy and chemotherapy, so I postponed him. Okay. So conclusion is 3D printing is revolutionizing the field of plastic surgery, offering numerous advantages to both patients and surgeons. It allows personalized planning and improved surgical accuracy and potentially better patient outcomes. You can see from the images also. So still some challenges are remaining. We need a lot of research over it. Thank you. Thank you. Any questions if are there? If no questions, then thank you again. Twins for what? One person. Cloning is there. Cloning is there since 90s. So who is the first clone? First clone, which animal? Dolly sheep. Sheep was the. But why it has been not been developed? Why humans are not cloned in last 35 years? Ethics, mainly ethics, and the concern are so much because it cannot be controlled then. If it is allowed and the research is going on, but still, what at present they are doing 3D printing the heart. Okay, so tissue 3D printing is going on. The research on tissue 3D printing is going on. So if someone if ear is not there, some these I have not included those cases, but some kids they come to me, they are not having ear. The ear is not developed. We call them anosia or microtia,
or maybe some burn patients or accident patients, they have this trauma, it has been avulsed, or maybe someone has dog had bitten it, or some accidental trauma, they lost their ear, or some infection, they lost their ear. But it doesn't look good, no? Not having ear, it doesn't look good. They want this thing. So what the first solution, I will give multiple options to them, what I am having at present. So one option is कि okay, prosthetic, silicone prosthetic बना लो, ये कान के जैसे, they make it with the molding technique, they are making it, और वो बना के just glue it, or maybe stuck with your that spectacle, and you can wear it, or we can wear it with the cap also. Another thing is having that artificial ear, silicone ear, with attached to your bone with the magnets. I had to do that osteointegrated implants, and then attached with the osteointegrated implants, we can attach the ear with the magnets also, or with the clips. Another option is we will do the surgical things. Okay, I don't want that silicone ear, because silicone ear will be of the perfect shape, but it won't have that hairs, normal skin won't be there, that sweating won't be there. So if someone is looking closely, then he can identify that the ear is not natural. Okay, from a distance with photographs, nobody can identify. So we do with the surgery skin also, we take out the cartilage from the chest. This is also soft cartilage, not this much soft, but they are soft. We can carve it, we can mold it and carve it, and we make this framework. Then it's a 3-step surgery to make a ear. I had to make a pocket over here, put down the cartilage, just close it. After 6 months, I will be elevating the ear. The cartilage already is there, the skin is already there over it. Then I have to elevate it and do the skin grafting on the back side. Then the patient will be requiring the soft lobule also. इतना सा कान से नहीं होगा मैं का हड्डी, मुझे ये भी चाहिए पूरा. So we have to make the lobule. If some existing lobule is there, I have to transpose the lobule there, or I have to make a lobule with the neck skin. Like that we can make this lobule. And some minor corrections, maybe this tragus is not sufficient, or it is bigger or smaller, then I have to adjust. 3-4 surgeries are required. And okay, अभी 3D printing or something mold or something, यार मेरा हड्डी नहीं निकालो, अभी कुछ भी करा लो. So we come with silicone implants. Silicone implants, these are not customized, but these are general silicone implants. There will be sizes 1, 2, 3, 4 different sizes will be there. We have to buy the silicone that cartilage framework. That is not cartilage, that is silicone framework, and I have to insert that thing only, not the cartilage. And the rest of the process will be same. So, but again the ears are very different. Every person is having different ear and different structures. What if I use that silicone also, and still सर मेरा ये कान के जैसा तो नहीं दिख रहा है. अब patient ultimately that expectations goes on increasing always, कि थोड़ा सा हो जाएगा. इनिशियली रहता है कि यार बस मैं इतना हो जाएगा ना सर, मेरा कान कैसे भी दिखे हो जाएगा तो आई विल बी हैप्पी. बाद में सर थोड़ा और अच्छा नहीं दिख सकता, तो इट इज़ ऑलवेज देयर. तो एक इट्स ए क्वेस्ट फॉर परफेक्शन, और अच्छा क्यों नहीं. मैं मेरे सर्जरी में हमेशा बोलता हूँ, जब सर्जरी चलती रहती है मेरा एनेस्थेटिस्ट और मेरे सब OT असिस्टेंट को नाम पता रहता कि कुछ भी हो गया तो मैं पूछता हूँ कि कैसा है, देखो सब लोग एक बार आपको ओपिनियन दो कि थोड़ा और अच्छा. तो हाँ बोलते सर थोड़ा और अच्छा दे दो, कि थोड़ा और अच्छा और हो सकता है, हमेशा हो सकता है, करना चाहिए. तो अभी हमको चाहिए 3D प्रिंटिंग में बोन प्रिंट करा दो मुझे, मैं डाल दूँगा या कार्टिलेज. ठीक है, चलो थैंक यू. It's very related with dentist also. उनका भी वैसे रहता है, जरा सा ऊपर चला गया तो बोले मुझे इधर चबाने में बहुत तकलीफ है, बहुत पेन है ना. अगर वो बराबर उसको लेवल में नहीं लाया या नीचे चला गया तो बोले वहाँ खाना फंस रहा है. सिमिलरली इम्प्लांट, फिर FTP शायद उनका भी फिक्स रहता है, रिमूवेबल रहता है, दिखाने वाले रहते हैं, खाने वाले रहते हैं, इस तरह से उनका भी रहता है. उसमें भी मेटल है, सिरेमिक है, सिरेमिक में भी कलर आना चाहिए. हर एक का पीलापन अलग अलग रहता है. ज़्यादा बहुत पीला सारे दिख रहा है ये बीच वाला, या फिर ये बीच वाले दांत बोले सामने के ज़्यादा सफ़ेद हो गए, आपके आजू बाजू के पीले हैं. सो इट्स लाइक वैसे भी वहाँ भी आपका एस्थेटिक बहुत मैटर करता है. अब मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ, मेरी वाइफ डेंटिस्ट है, अच्छा, वो सुनाते रहती है मुझे, बिल्कुल बिल्कुल. देखो ये ऐसा हो गया, उसका ऊपर हो गया, कुछ हो गया,
बिल्कुल सर, क्वेस्ट फॉर परफेक्शन नेवर स्टॉप्स मुझे एक्चुअली। हंसी इसीलिए आ रही थी, सर बता रहे थे कि और अच्छा हो सकता है। हाँ बोले मैंने कार्टिलेज तो लगा लिया बट लोग रह गए, बोले वो मैंने लंबे नहीं वो दिख भी रहे। चाहिए, हाँ। और वो सर की इसमें भी कान बराबर में तो चाहिए। हमेशा सिमेट्री सिमेट्री जहाँ पे आ गई Exactly. इज ऑलवेज डिफिकल्ट, लेकिन कर सकते हैं। It must be very similar. बराबर पैरेलल सब आनी चाहिए, बराबर दो कान दिए तो दो कान मैच होनी चाहिए, दो आंखें तो दो आंखें होनी चाहिए, एक है तो भाई ठीक है समझ नहीं। एनी क्यूरी प्लीज। सर ने एक क्यूरी पे आंसर इतने सारे दिए, पूरा का पूरा 5-6 टेक्निक बताई सर ने। हाँ मैं सब बहुत बता गौर से देता सुन रहा था कि बता रहे थे सर ऐसे लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, कार्टिलेज बोन भी लगा सकते हैं, Bone भी लगा सिलिकॉन भी सकते लगा हैं। सकते हैं, है ना। एक और मेथड बताई कि बोन के अंदर मैग्नेट लगा के वो सिर्फ चिपकाना है, चिपकाना, मतलब इट विल ऑस्टियो इंटीग्रेशन। और फिर लास्ट वन इज 3D प्रिंटिंग। सर ऑलरेडी वर्कड विद अभिजीत राउत सर, सो सर हैव so many experiences और केस स्टडीज विद हिम। मेडिकल फील्ड में रिस्ट्रिक्शन हो जाता है। अभी मुझे जब भी मैं अभिजीत के साथ बैठता हूँ और मुझे प्रॉब्लम बताना है उसको कि यार ये पेशेंट में ऐसा दिक्कत है, ये पेशेंट में ऐसा दिक्कत है, क्योंकि जो इनोवेटिव थिंकिंग चाहिए रहता है वो उनकी तरफ में थोड़ा सा आइडियाज़ रहते हैं कुछ, सर यहाँ पे मशीन लगा देंगे, यहाँ पे ये कर लेंगे, यहाँ पे ऐसा कुछ कर सकते हैं, हाँ तू बताते चल जल्दी जल्दी, समथिंग गुड विल कम लाइक दैट। और सर आने वाले नहीं थे, सर के पास सिर्फ आधा घंटा था, ये भी बात बता दूं। सर ने पहले कमिटमेंट लिया था कि मैं आधे घंटे से ज़्यादा बोलूँगा नहीं, मेरे पास सही में बहुत शॉर्ट टाइम है, मेरी बहुत सारी सर्जरीज रहती है, बट स्टिल आई कन्विंस्ड हिम कि सर आप आ जाइए, एक दो केस स्टडीज बोल दीजिए और फिर हम आपको रिलीव कर देंगे, बट अल्टीमेटली कम ज़्यादा टाइम हो ही गया। थैंक यू सर फॉर कंसिडरिंग आवर इन्विटेशन। थैंक यू। Anyone have any question? कर सकते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ में हो रहा है। अब 3D प्रिंटिंग, बोन का 3D प्रिंटिंग अभी अपनी उसके जो मशीन है वो इंडिया में नहीं है। इवन सिलिकॉन का 3D प्रिंटिंग का मशीन पूना में एक जगह पे है और शायद एक ही जगह पे है, ऐसा कुछ है। और उसमें भी बहुत कॉस्ट लग जाती है, मतलब हमको अगर ये 3D प्रिंट कुछ कराना है छोटा छोटा सब सेगमेंट तो उसमें 1-8 लाख का खर्चा आ जाए। किस में सेल ग्रोथ होती है, किस में 3D प्रिंटिंग का, प्लास्टिक सर्जरी का तो कितना क्या करना है उसके ऊपर में डिपेंड करता है, 5-10 हज़ार। डिपेंड्स कि आपको पैच कहाँ लगाना है, हाँ, इतना है या इतना बड़ा है। 5-10 हज़ार से स्टार्ट होता है, लाख रुपए तक जाता है। नॉट दैट कॉस्टली। एक परसेप्शन रहता है कि प्लास्टिक सर्जरी बहुत महंगा है, वैसा नहीं है। आपकी पैर की हड्डी टूट गई ना तो आपको पता चलेगा यार वो ऑर्थोपेडिशियन ने हाथ की हड्डी या पैर की हड्डी टूट गई, उसके लिए लाख रुपए लग गए। यार फिर कॉस्मेटिक सर्जरी तो मेरा 60,000 में होना था, तो सस्ते में होना था। मैं अभी इंशाल्लाह ताला मालिक करे ना, लेकिन फिर भी हमारे पास है इन कनेक्शन तो होप फॉर बेस्ट इट विल बी चीपर, है ना। चलिए प्लीज प्रोसीड। Thank you so much, sir, for your informative session on challenges and future of 3D printing in plastic surgery. Now, I would request Principal Sir to appreciate Dr. Pawan Shahane sir by offering shawl, shriffle, and memento as token of love. Sir, please. That's why I told you ऊपर में बैनर वहाँ पे निकालो। Thank you so much, sir. So Islam sir is waiting for on other side for the session. So ma'am, as early as possible please start.
Industrial Research, Government of India. Sir has his expertise in computer-aided drug design, bioinformatics, and molecular modeling. He has been awarded with Young Scientist in India Chemical Society. Also, Sir has more than 70 peer-reviewed publications and more than 30 conferences presentations. Now, I would request Dr. Ataul Islam Sir to please proceed to deliver his session. Yeah, I. What time we start? So you can start now. So, hello. Yes. What time we So, start? so you can start now. Yes. Hello. Sir, are you getting our voice? Yes. Audible. My screen is visible. Yes, sir. Can you see my slides? Yes, sir. It's visible. Okay. So, very good afternoon, everybody. And first of all, I would like to thank organizers to invite me to speak about my expertise in this national faculty development program. So, in this talk, I will actually give the overview about how can we implement the artificial intelligence and machine learning in drug discovery field. So, basically, I'm not going to discuss any research outcome here because my objective of this presentation to give the how can one use the artificial intelligence in the drug discovery research. So today I'll explain very brief 2-3 slides about the bioinformatics and then I'll go for the drug discovery. I think I'm the wrong person in this crowd because a lot of people from the pharmacy background, they well known about this drug discovery. So please excuse me if anything I'm saying wrong. And then I'll talk about this artificial intelligence and machine learning, very basic concept. All this is a very complicated subject and vast subject. So I'll try to touch the brief about it. And then 4 approaches I have considered for this presentation of the drug discovery. One is the quantitative structure activity relationship. I will explain briefly what it is and then how people are using the AI machine learning. And also I'll give the concept of pharmacophore and how can people are working in the cutting edge of AI machine learning in pharmacophore modeling. Then molecular docking as well as the de novo design, I'll give brief about it. So what is the bioinformatics? Bioinformatics is the combination of the different subjects. It's interdisciplinary subject. So here it involves mainly the life science, the computer science, along with that the chemistry, biochemistry, statistics, mathematics. So these are the different subjects comes together to help the bioinformatics. Now help the life sciences. That is called the bioinformatics. So when we need to understand the complexity of the life science in regards to in the help of computer science and any other discipline like engineering or mathematics. So that is actually bioinformatics.
So bioinformatics that as I told you, its support system is computer science or database management or the life science. And once you have the bioinformatics, that can be used in a wider range of fields like molecular biology, genetics, biochemistry, evolutionary biology, then pharmaceutical sciences. So I'll talk about little bit about this pharmaceutical sciences and all this thing, and then multi-omics fields. So these are the main areas where bioinformatics are working very efficiently. So here, the drug designing, that is the today's topic. I'd like to give a brief idea. I know this 1 hour is not sufficient to talk about what is drug designing, but I'll try to cover a few things uh, in this session. So what is drug? So this is drug is a very small molecule which influence the biological process when induced into the body. So one then why we need to design or discover the drug? That is, one concept is that if there is a new disease, we need to identify the drug molecule, or existing molecule we can modify to improve the efficacy or effectivity or reduce the toxicity. So that is another purpose. So actually, it is said that God has created all diseases, and He also created an agent or a drug for every disease. They can be found everywhere in nature, because nature is the universal pharmacy, and God is the universal highest ranking pharmacist. So the the suitable molecule or the drug-like molecule or drug molecule somewhere with us. So we need some technique, we need some approaches to find out which one is suitable or which one is for useful for our uh, disease, for the treatment of the disease or the management of the disease. Okay, so the drug discovery or the pharmacoinformatics or the drug designing, this is one of the approaches to find out the good molecule over the bad molecule, or the drug molecule over the non-drug molecule. So as we know, that is, it is a very complicated process. If you start, so the thousands of molecule, so the plenty of steps are there. So maybe at the end, you may have one molecule or may not be, and so this is a multi-step process, and in each step is a kind of error-prone steps. So the trial and error method. This is very complicated and time-consuming approach. So I'll explain next slide. So if we start with around 5 to 10,000 compounds, and for going for the digital identification or target value identification, followed by the validation, and then you come down with some hundreds molecule and go for the clinical testing or pharmacokinetics, pharmacodynamics, and then with few molecules you go for the clinical trials, and maybe on a BEM drug molecule. So this entire process, approximately from beginning to the drug come to the market, because after the preclinical testing you have to take the approval from the FDA approval or new drug approval or investigational drug approval, lot of approval required. So all these steps are very time consuming. So overall, it is observed that for a single drug molecule, it takes around 20 years of time and more than 1 billion of US dollar investment. So definitely, this is no doubt it is huge time. As you know, there is no effective drug till now for the COVID-19 as well. So in this scenario, we need some smart technique. We need some smart approach which can reduce the time taken of the drug discovery pipeline, as well as it can reduce the cost of the drug development. So here we can say pharmacoinformatics or cheminformatics or bioinformatics or computer chemistry. So these are the things someone can actually use these terms, these synonyms, but there is some borderlines are there. So these are the approaches we can use to enhance the drug discovery pipeline and reduce the cost.
So what is actually the how actually the informatics involved in the drug development process? So you can use the computational approach in the neuroscience or immunology or genome science or biosystem or maybe pharmacokinetics or toxicology. So when all these subjects actually taken considered the computational resource and computational power, and that actually helps in the drug discovery process, that is called the pharmacoinformatics. So pharmacoinformatics, basically it is the pharma plus information technology. That means when the information technology are helping in the pharmacy field, that is called the pharmacoinformatics. So one of the domain of the pharmacoinformatics is the drug development or the computational drug discovery. So maybe some storage of the pharmaceutical data, management of the pharmaceutical data. These are the different application of the pharmacoinformatics discipline. Once you have the drug molecule, with the help of information technology or without help of information technology like traditional drug discovery, you need a set of another informatics approaches to monitor the drug. Like you need the pharmacy informatics, you need the drug informatics, you need the nursing informatics, you know the biomedical informatics, you know the healthcare informatics. So all in all these fields, your drug actually working. So when you the drug in the market, you are prescribing to the patient. So all the data from the pharmacy, from the drug efficacy, from the how the nursing department handling these drugs, and how what are the data they are actually achieving. So all these data also we need to manage to further check the effectivity of the drug, or if may need to modify the drug. So all this, the before the drug development, you need set of informatics, and after the drug development, also you need is sort of informatics to manage or to check the quality of the drug. So there is another way we can use, that is cheminformatics or computational chemistry, computational biology, bioinformatics. All are helping in the pharmacoinformatics to get some good candidate. Rather I would like to I'd like to prefer to say about the promising or potential molecule rather than drug, because drug is a far away, because we are not working to develop the drug. We're trying to find out some potential molecule that may be converted into the lead molecule and followed by the clinical trials, and then only we can say drug. So these are the disciplines, these are the informatics actually helping in the drug discovery pipeline. So these are a few things actually the computational drug discovery approach. So docking, as you know, there is an association between the two molecules. I'll talk about this thing little bit. Binding site identification, very crucial thing, because your drug should deliver at the active site, and where is the active site, that you have to find properly. So computational approach can help to identify the druggable sites or potential target where your drug can bind and produce the effect. Protein comparison for the characteristics analysis, you can do transcriptional signature, network analysis we can do to get some analysis of the data, to get some outcome from here about this similarity or like that. Data mining, very important thing. You have a lot of data in the database. How you can mining those data? So data, that is very much important. So nowadays we are flooding with data. The huge number of data are there. So that is another subject is called data science. So if you are smart to get the good data, so you are the clever. And that smart technique actually we're trying to find using the computational approach, or rather better I would like to say artificial intelligence and machine learning approach.
That is the machine learning approach helps in a tremendous way. I try to give some very brief idea about it, how actually go. Ligand similarity, if you have your known ligand, standard ligand or known drug, you can find some similar molecules from the already existing database having millions or billions of compounds. So these are the more or less application. Apart from there, a lot of applications are there also for the computational approach. So, in a very briefly, actually, I would like to say that is, which situation, what are the approaches we can consider for the computational drug discovery approach. Although this is not a fixed, but just get some brief idea about it. So suppose if you have the known protein structure or target structure, that means already it is solved, crystallized, and experimental data is there. Some known small molecule already crystallized with their biological activity is there. So we can go for the structure-based drug designing. So I think we know that is the molecular docking because the prototype of structure-based drug designing. Then in other sense, that is you have set of known ligands with the biological activity, experimentally tested these molecules, but their target yet to crystallize. In that situation, we can go for the ligand-based drug designing or receptor-independent drug designing. So here the similarity searching, pharmacophore modeling, QSAR, these are the different approaches can be used. So from based on the availability of the data, you can decide what kind of approach I should go for my study. So in case of if you have the protein structure known, but there's a known ligand is there, so you can go for the de novo design. That also I'll talk a little bit today. In our scenario, if there's a no known crystal structure of the protein and there's a no ligand yet to know, then in this situation, there is nothing to do the computational approach. Then we have to go back for the experimental approach. We have to wait, or we are dependent on the experimental data. So this is our view about it, but this is not the fix. There's a lot of other situations where we can decide what kind of approach we can do, especially when the artificial intelligence and machine learning came in the role this along with the other fields, this drug discovery fields also changed drastically. So that actually I'll try to explain. So this is also the same thing, similar way, the different representation. If you have the protein, then you have some experimental data. You design the molecule, you screen the molecule based on your given criteria, and then go for the validation through the experimental approach, or then you can go for the final molecule, or again go for another set of assessment or designing the redevelopment of the molecules, optimization of the molecules. So now I have just spoken about the computational drug discovery. I'll try to give you the very brief about artificial intelligence and machine learning, and then I'll go to the different approaches there. So artificial intelligence is a technique that enables computers to mimic human intelligence using logic, if-then rules, decision trees, and machine learning, including deep learning, etc. And machine learning is a subset of the AI that includes abstruse statistical techniques that enable machines to improve a task with experience. The category include the deep learning, etc. And deep learning is a subset of the machine learning, which is composed of algorithms that permit software to train itself to perform tasks like speech or image recognition by exposing the multi-layer neural network to the vast amounts of data. So here, these are the different fields where different, rather I would say the different areas where the artificial intelligence are working very, very effectively. So these are the different components of the AI machine learning, that is machine learning, deep learning, neural network, neural language processing, computer vision, cognitive computing. So based on your availability of data,
and quality of the data, because as you know that is for the machine learning thing you have to train your model based on the available of the data, and that trained model you can use for the unknown data. So depending upon the availability of the data, quality of the data, types of the data, you can decide what are the machine AI approach we can use for developing the model and followed by the use of this model. So these are the different components of the machine learning thing, like supervised learning, unsupervised learning, reinforced learning, and their subdivision. So that I told you, that is what based on the data you can decide which type of AI approach you can use. Suppose you are in the machine learning approach, based on the data, you go for the clustering or development of the model based on the dependent, independent variables, so etc. So these are the different components or different approaches of the machine learning field. So now I'm going just narrow down to the topic, that is how what are the fields, what are the healthcare sectors or healthcare fields where AI are using in a large extent. So like clinical trial design and monitoring, quality assessment and quality control, pharmaceutical manufacturing, pharmaceutical product management, drug discovery, that is actually our topic today, and the pharmaceutical product development. So these are the main areas of the healthcare sector where the drug discovery are artificial intelligence are using at a very big extent. So here, I would like to give you the framework. That is, if you are planning to go for the machine learning or artificial intelligence in your drug discovery research, so what exactly you need to know, or what exactly your data should have. So again, I'm saying that this is not the abstract, but just give the idea, that is what kind of data you need for your modeling and all these things. So definitely that I told you, you need the known data. So we are dealing with the drugs or the, not drugs, that is molecules. So definitely we need the molecules and the chemical structure of this molecule, and these are the source of the different databases like PubChem, Drug Bank, Campbell, Binding DB, Asinex, etc., etc. So a lot of the databases are there where we can get the biological chemical compounds and their biological information. From there, we can develop the different properties of the molecule. So in a technical term, it is called descriptors. So maybe 0D or 1D descriptors, or 2D, 3D descriptors, or maybe the multidimensional descriptors. So those descriptors you have to calculate. Rather I say, those properties we have to extract from the available molecules, and we have to identify the pattern, that is how these properties, or what are the properties of these molecules become the good or bad. Once you have this data, that information, suppose you have hundreds molecule, and then in these 100 molecules you are extracting the features or the descriptors or the properties, and you got some important properties that you conclude that these properties make them molecules good. So we can generalize it. Yeah, if new molecule present this kind of data, so that might be good molecule for that particular target. So once you have these properties in the form of descriptors, you can choose what are the algorithms or the approaches of the AI machine learning you need. You need the regression or classification or clustering or dimension reduction, that you have to decide based on your project objective as well as the availability of the data. And here that is application that is mainly in the drug discovery. Actually, we use toxicity prediction, biological activity prediction, de novo design, all these things. Actually, we're using huge extent the AI machine learning data, because
when we're dealing when we have the chemical space, the large chemical space, that will give you the more insight about the behavior of this molecule. So if you have a very huge number of molecules, so the manual inspection, manual not curation, I can say the manual extraction of the features or the properties is quite difficult. In this situation, we need some smart technique or the machine learning approach or AI-based approach that actually give you the idea or give you the some sort of conclusion. Yes, these are the basic properties you should have for a good molecule. So these are already I have discussed this thing, that is supervised learning can be used in a different approach, like toxicity identification or drug adverse drug reaction or drug interaction, compound classification. So for these are the methods that are say multiple linear regression or decision tree or LR or support vector machine. So these are the different machine learning approach you can use. Similarly, if you are planning to cluster your molecule based on a certain properties or certain parameter, so you can go for the unsupervised learning, that is clustering or dimension reduction. For that, you can use the K-means clustering or hierarchy clustering or principal component analysis or TSNA. So these are the different well used machine learning approach in the different applications. So these are the details about this, some already available tools. Some are available in their website, some are available in GitHub. So like DeepChem, DeepTox, for toxicity prediction, deep neural net QSR model development, etc. And you know very well there is AlphaFold. AlphaFold is a tremendous discovery, not discovery, this is a tremendous work or the milestone work in the structural bioinformatics or the structural chemistry, because we need the 3D structure of the protein for any kind of drug discovery approach. So the AlphaFold, actually with the help of EBI and the DeepMind, the company, they developed the AlphaFold algorithm by which all the sequences are converted into 3D structure. So this is the one of the milestone in the drug discovery or the structural bioinformatics field. So here, how actually use the AI, like we suppose you would like to get for the toxicity of the molecule. So you have some molecule, which known molecules, those are actually giving the toxicity. So then you can encode it, you can extract the data, and then use the AI machine learning technique, and then you will have some model that can actually tell you that what are the characteristics should not be present in a molecule so that it will be non-toxic in nature. Similarly, bioactivity also we can go predict based on the input data. You can develop the model, and then you can segregate. Suppose you would like to analyze the anti-cancer molecule. So you should have the anti-cancer known molecules with their biological activity. Develop the model, and that model can be used to identify whether the new molecule is anti-cancer agent or not. Similarly, antibacterial, antiviral, or any kind of target we can use. Similarly, the physical properties also we can check. So based on the some molecules, we can develop our model through the machine learning, and then that model can be used to predict the different physiological property like hydrophobicity, solubility, or GI absorption, or BBA, or whatever, etc. Also the synthetic accessibility, etc. So these are the things that is that I very beginning I told you, that is I'll give you some very basic concept about how the AI machine learning can help in the drug discovery or the handling the molecule to get the better quality molecule, non-toxic molecule, high efficacy molecule, or high the acceptable pharmacokinetics
profile molecule. So these are the things based on the data, based on the research objective, you can use that, you can select a different approach for to fulfill your goal. So this is another approach, that is how actually we use the de novo design. I'll tell you very shortly. This field also actually AI machine learning helping a lot, because that in the beginning I told you, if you have the huge number of data, so that data only can be managed to the some smart technique, and that is the smart technique is the AI or machine learning approach. So de novo design, if you generate the thousands to billions of molecules, so that molecule can be monitored using the AI machine learning approach. Similarly, the binding target, drug target binding affinity you can predict. So I'll show you one tool. How can if you have suppose 1 billion compounds. So the normal process to check the affinity, the molecular docking. So it is very, it is not impossible, but it is very difficult to dock 1 million compound in a normal computer system. So in that situation, how the machine learning can help you to get the better molecules out of millions of molecules in thousands or hundreds. Also, this that is in case of the 3D structure prediction of the molecule. If you have sequence, you have the new sequence of your target, or you have engineered sequence of target that you have mutated some sequence, and you need that sequence to be converted to 3D for a study. Then the AI machine learning helps a lot to predict the 3D structure in a less time with a less effort. So these are the different approaches or different fields where we can use the AI machine learning. Now, this is the actually just for information, that is the how with the involvement of the computational power, the different machine learning or artificial intelligence approaches are came in the market. So in 50s, the AI first actually proposed, or the concept came, and 1960s the QSR concept. If you study, but the exact concept in 80s, 64 I think, if I'm not wrong. But the what I can say, that is a complete expression, a complete representation of the QSR modeling came in 1960s. Okay, and then you can see that is bytes to kilobytes, and then the molecular docking involved here, and then in a megabyte or the 64 CPU, the artificial neural network came in the market, where you can select the variables and all these things. When the gigabyte memory came, and computational improved to CPU to GPU, the deep learning actually came here, and with the help of the GPU, you can analyze or handle the big data. And when you can have the cloud kind of system, that is like AWS or Google Cloud, so there actually you can use the neural network approach, and you can also handle the terabytes of data. So this is process is going on. It is process. This is the old data. So nowadays we know that is the compressor power increase exponentially, the price reduce. So people are working and developing that lot of approach of the AI machine learning in this developed system of the computer. So this is actually how, when the AI or machine learning came in the market, people are crazy about to apply in a different field. And similarly, the people are also involved in the drug discovery field. So if you see here, the 2020, it is around 380 million US dollar investment in US only in the drug discovery field through the AI, artificial intelligence, and it is expected that that is in a 2030
I think it is for about 20, 200, $2,000 million approximately, if I'm not wrong. So these actually, the plan is there investment in US market only. And also you can see in a color graph that is the what are the thrust areas of the disease of interest, like oncology, neurodegenerative disease, cardiovascular disease, or infectious disease. So these are the different, based on the disease, the people are investing in the field of artificial intelligence based drug discovery. So from here you can get some idea that is how much money actually coming in this field if you are using AI-based drug discovery research. So this is the global market, how actually in which area actually which disease area actually most involved with the drug discovery and investments as well. So you can see the drug optimization and repurposing using the AI machine learning with the more than 50%, and then preclinical testing and others. And it is the 2021 data, around 900 millions investment in the global market in this field. So now, actually, I have given basic about the drug discovery, what it is, and how, what is the machine learning and approach, and how the people are involved in involved this AI machine learning in the drug discovery field. And now I would like to explain some 3 or 4 basic concept of the drug discovery, and how one can use machine learning to work in these fields. So QSAR, the quantitative structure relationship, that is the biological activity is the function of chemical structure. If you change the chemical structure, the biological activity will change. So that trend, that can we quantify, that we fetch that trend as well as quantify, that is actually the QSAR, structure activity relationship. When we can quantify, so that is called the QSAR model. So just very brief one example here. Suppose if you see this kind of molecules, I'm sorry, I'm not very well known about the chemistry. So here you can see this is the first molecule. This is 500,000 the biological activity, the inhibition constant. It is experimental data. If you remove if you replace the hydroxyl group with the methyl group, so your biological activity will change 100,000. And then if you remove one hydroxyl group, so it come down to 12,500. And again, another hydroxyl group if you remove, so the biological activity will come down 1550. And then in the next, the last 3 molecules, if you introduce one fluorine in place of hydrogen, so this molecule, the biological activity will come down to 50, and again the fluorine 5, and another fluorine if you introduce 2. So from this observation, from this experimental data, we can understand that yes, the biological activity is changing if you modify the molecule. So when we actually forming a certain rule or trend or quantifying or calculating exactly what amount of biological activity will change if you introduce a certain group or you remove a certain group, that is called the QSR. So for that we can do the regression analysis. So from this data, if you go for the regression analysis, we will have this kind of a model. So here it is saying that is log 1 upon Ki equals to some constant number of fluorine minus some constant number of hydroxyls plus some constant, that is the slope, intercept, sorry. So here this model explaining that if the number of fluorine increasing, the 1 upon Ki will increase, that means Ki will decrease. Similarly, the negative coefficient of hydroxyl group explain that if the number of hydroxyl group increase, 1 upon Ki will decrease, that means Ki will increase. So how much quantity? We can multiply these values and we exactly calculate what amount of the biological activity change. So suppose if you have this
the new molecule with this series molecule. The contains belongs to this series. Then you just calculate the number of fluorine, number of hydroxyl group, and put the value here, and then you calculate the biological activity. This is the predicted biological activity. So this actually we can quantify, or we can measure the quantity of the biological activity changing. So that's what is called the QSAR, or quantitative structure activity relationship. So for QSR model development, very briefly, you should have the descriptors of properties. Then you have to find out the important properties of the descriptors from those pool of descriptors, and then you have to go for the regression analysis using different chemometric approach, and then you have model, and then you need to validate the model. And once it's validated, that model can be used for unknown data. So here I'm not going to details because a lot of approach are there that I told you based on your research objective, what exactly you want from this research, this work, and what kind of data are there. You can design this your you can decide what are the approach you can take. So suppose if you are working the structural attributes, that means you are exploring the structural behavior or structural characteristics of the molecule. So you can go for the different descriptor generation, and then you can go the feature grouping or dimension reduction. For that you can use SVM or XGBoost or GB or NVM, etc. And finally you will have some molecule. Now other sense, if you have the sequence space or representation graph or graph representation, space representation or graph representation, so in that like topological kind of thing when actually dealing with that is presence of this functional group, how the this functional group will affect. So this kind of representation will explore. So you can go for like the CNN or the GCN or autoencoder, etc., for the molecule. So these are the very complicated approach, not complicated, that I told you, that is you have to decide what are the approach you take based on your available data. So nowadays the people mainly use to predict the toxicity of the molecule, toxicity of the nanoparticles, or the biological activity of the small molecules. So these kind of models are actually developing through this kind of machine learning approach. So pharmacophore model, what exactly it is? It is the spatial arrangement, three-dimensional arrangement of the functional group, how in a three-dimensional space they are arranged so that they can form the potential interaction at the active site. So that is called a pharmacophore model. So try to identify, because we know this hydroxyl group maybe have a hydrogen acceptor donor, or this amine group is one of the important functional group, acid group is there, or some benzene rings are there, or some alkyl groups are there. So we try to understand among this functional group, what are the functional group play important role to form the binding interaction at the active site, and how they arrange, how they should arrange. So that actually is the pharmacophore model. The next slide I will explain a bit here. So this is one of the molecule, I think, I don't know, this is molecule, I think, morphine, if I'm not wrong. So this molecule, actually the analgesic molecule. So the presence of this hydroxyl group, benzene ring, and here the nitrogen atom, these three functional group play important role to impart the analgesic activity of this kind of molecule. So we need to try to understand. So if you see here that these all three molecules, so morphine, metazocine, or levorphenol, all these three molecules contain these kind of functional group. And their orientation also same. That's why all these three molecules are in a similar kind of activity they are showing, like analgesic activity. So now from here we can try to understand, yes, this hydroxyl group, benzene ring, nitrogen group, these are important, and their arrangement, if you come to know their arrangement or their distance, so that I can propose
these are the distances, or these are the orientation, these are the coordinates are important for important for any kind of molecule being a analgesic activity. So from here we can actually extract data, hydroxyl group here, aromatic ring here, natrium here, and we can calculate the distance, we calculate the angle. So now we have the three-dimensional space of these functional group. So I can propose to a chemist, so I need a molecule we should contain these functional groups in their the interfeature distance along with their angle. And if such kind of molecule design or synthesized, so I can expect this molecule should behave like analgesic in nature. So this is one of the example, the pharmacophore guided deep learning approach. So here, what exactly it is doing. So if you have a known molecule, you know a drug molecule, or you have the standard molecule, good biological activity molecule. So you just find out what are the functional group make this molecule is important for this target, and from that uh, pharmacophoric concept, you can design the new kind of molecule, the novel molecule. So that actually through the machine learning approach. So this tool just recently came, if I'm not wrong, last year it came, and it is available in a GitHub. Now I just would like to explain the docking. I think it is very well known to everybody, and I also I'm running out of time, so I'll actually speed up my presentation actually. So docking is based on the availability of the target. You can narrow down what are the good molecule, what are the bad molecule. So this is other way I can explain the association between the two molecules to show the effectiveness or the binding affinity or binding energy between the two molecules. That is the molecular docking. So molecular docking may be the small molecule, macromolecule, macromolecule, macromolecule. So this kind of we can do. So here the representation, like this is the classical docking. That is, if you have the your protein, if you have the molecule, you can use any docking engine and a dock. Inverse docking, that means that with the help of the reverse docking or inverse docking, one can identify the potential target as well. So this is called a reverse or inverse docking. So here, the another way to representation, you have target, you have the ligand. So you can go for the sampling of the ligand inside the active site, that is known as pose. Or you can rescore this thing, or you can train this thing, and again you can improve the quality of the pose, and finally you can get the top scored or top quality of top quality of the orientation of the molecule. So these are the some traditional tools. Some are publicly available, some are commercially available tools for the molecular docking. So here, these are the wide range of application of the molecular docking, like polypharmacology, deep repurposing, prediction of the adverse effect, the identification of the target, virtual scanning, or ligand binding, rationalization, etc. So here, these are the machine learning approach, like neural network or the convolutional neural network or graph neural network. So these are the machine learning approach are widely used in the molecular docking study. So just there is plenty of tools are there. I would like to explain this deep dock, very effective here. What exactly it do actually? Suppose you have 1 million compounds that I said at the beginning, that is, if you have 1 million molecule, it is not possible to dock all the molecules. So in that situation, you can take the subset of the dock. Okay, I'll try actually. I'll try to finish as soon as possible. Okay, so if you have millions of compounds, so you can take subset, you dock,
in a normal conventional way, use the binding energy and the molecule, predict, develop the model, and using that model you can predict the binding affinity of the remaining molecules with a large set. So that actually speed up the docking and avoid the docking of the entire set. So this is the de novo design based. Here actually, if you have the receptor, based on the receptor, we can design the new molecule or the novel molecule. So two approaches mainly are we use. One is called a linking. So you have the different fragments. You feed the fragments at the active site, or just use a linker to link, and you'll get have the new molecule. Or another is called the evolution based. So one on fragment you have, you just evaluate you just increase this fragment in a different way and try to find which increase is potential for this target, and you have the good molecule. So here this is another way to represent. I'm skipping this slide. So reinvent, this is one of the tool. There are plenty of tools are there. Drug is there. A lot of tools are there. If you search the Google, a lot of tools, AI-based de novo drug discovery tools are there. So one of the important tools is the reinvent. Here, actually, there's a 4 or 5 modules. The generator, reinvent, live invent, then a link invent, and a mole to mole. So these are the different packages are there. Which actually use the machine learning model to design the new molecule based on the given active site. So I think I have given very brief idea about how we use the AI machine learning drug discovery. So I think I'm just very finished thing. So I would like to just introduce my company, the 3Weeks. 3Weeks is a Korean company, and we are working the Indian branch. So in India, we have 2 branches, one in Bangalore and another in Hyderabad. So mainly we are using in the cutting edge of the bioinformatics and computational drug discovery along with the AI machine learning approaches. So we are actually service-based company. So we are dealing with a large amount of data, big data. This is called the big data from the different like genome analysis, transcript analysis, or microbiome analysis, and that I told you the AI actually using in the drug discovery field also. So this is our team. So just I would conclude that yes, this is a very huge field, and along with the other fields, the AI and machine learning are enormously used in the drug discovery field to solve, to reduce the time taken and all these things. So ultimate the goal of the drug discovery researchers is that to become the world without disease, the disease-free world. So I don't think it is possible, but ultimate goal it is that. That's why the people are working in this field to design or to solve the disease. Thank you so much for your patience. Hello. Sir, am I audible? So if any question, Hello. yes, I can hear. Yes. Okay. Thank you so much, sir, for your informative session and your busy scheduled timing providing to us. And sir, the token of love from our team will be given to you on behalf of principal sir, and it will be posted you at your address. Thank you so much. Thank you so much. So this is your appreciation, sir. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you. So we have Dr. Shovanlal Bhaumik sir with us too in this meeting. So let's continue with the session from him. Please, sir.
Good afternoon to all. Now we proceed for the next session that is conducted by Dr. Bhomik sir. So I welcome Dr. Bhomik sir and please requested to start your session. Thank you. Hi, good evening to all of you. Am I audible anyway? Okay, that's nice. Let me share first my screen. It is visible from your end? Yes, sir. Okay, fine. So, okay, thank you. So, first of all, once again, very good evening or even good afternoon. It depends on which part of the world you are joining with this Googling meeting in this session. As I can see, this is the third day international faculty development program. So possibly from outside India, peoples or the professional faculty members are there in this interactive session. So anyway, so without any further delay, because we missed so many sessions just because of the technical glitch, and now I am going straight forward to the topic of our discussion. That is the genomics to the drugomics. What is the opportunities and challenges? So on behalf of the Silico I am presenting this particular interesting and the ever-growing field of our drug discovery or the pharmaceutical industries respective ways. So I am proceeding on that fashion. That first is the omics technology. So what do you mean by the omics, and why we need to understand this omics technology and how it can help in the pharmaceutical industry or even the other disciplines. So this approach, the multi-omics approach, particularly takes all the considerations of your entire different set of studies. It's starting from the genomics, transcriptomics, proteomics, and the metabolomics, or even the your metagenomics or epigenetics. So what are all those things, and what we can do with these kind of studies and the understanding of these particular omics things. So now the era is the X informatics. X can be anything, and we really can use the different data sets that can be analyzed and in terms of getting some meaningful or informative outcome from those data. So considering those fashions or those insight that this omics era can give us very good insight about the complete that means the complex interactions between the genes or even the proteins or the metabolites. So so now the first is the genomics. So what is the genomics? If we try to understand that how the genomics unveils the molecular landscapes of life. So genomics is an exciting field that really helps us to understand the genetic makeup of our entire genome. So, but how this entire genome is really helpful to save our disease biomarker or the disease understanding? Because the genome is not only just tells us that identifying or the quantifying the genes in the particular cell, but it also have a bigger pictures in terms of the structure, functions, and some mapping, and even in the genome. Nowadays, it's time called the genome mapping and the editing. So what kind of those particular aspects in terms of the genomics really help us to understand that there is a one very challenging aspect to resolve in part of your pharmaceuticals understanding. So if we say that the structures of the genomes is really organized within or the folded in the cell or
cell's nucleus. But how these 3 billion, if we talk about the human genome, that's almost the 3 billions in pairs. So how these 3 billions of nucleotide pairs are really folded in a small cell size of nucleus. So that understanding really tells us a very vast amount of information. So how those informations can be utilized and how to get those informations. So the principal techniques nowadays we really having in hand by a cheaper cost, like the snakes, finger sequencing, or days in the genome and the next generation sequence in between the DNA sequencings and the DNA really very can do some targeted genome or sequencing through the particular Sanger sequencing. So the field of genomics is rapidly advancing, fueled by your we can say the advancements of the breakthrough in the DNA sequencing and analysis. So how this particular analysis can be utilized. So applications of genomic in the understanding of the disease and development of the personalized medicine strategies, and also in the evolutionary studies. But this is not only the restricted region of the genomics. We can save or utilize the informations of genomics in the conservations. We can save and utilize the informations of genomics even in the agriculture's medicines or even in the environmental sustainability. So now going forward with your omics era in terms of the transcriptomics, like the genomics, so the transcriptomics is also the fascinating subfield of the genomics that focuses on particularly on the dynamic world of the RNA that revolves around the all complete set of RNA that transcribe from the DNA. So what is the principal technique we really can hold to get the transcriptomics data here? They are very limited, of course, through the sequencings like the RNA sequencing, and we can do the gene microarray analysis. So these are the very basic tools and techniques or principles we can really apply to understand or get the huge set of the transcriptomics data. It is not only that the transcriptome encompasses all your RNA transcript produced by the genome, but at a given time we can really understand they are the not only the coding region but also the non-coding regions, a diverse group of non-coding regions like the tRNA, rRNA, even your regulatory RNAs also. So what is the applications of this transcriptomics? So the applications lies here. If we see the structure, that means the depicted figures here, that how we can really do the RNA sequencings. Like we do the DNA sequencings, we have to extract the RNA using some specific yield kits. So we can really share it or the fragmentate it, then we have to convert into the cDNA. Either we can go directly for the singleton sequencings like we do for the DNA, but there is a challenge in the technological aspect. So better we can proceed with the paired sequencings that we call the mate paired for the better understandings of our transcriptomes. But it is not it's a simple step I am just showing you here, but there are very noisy steps you may get in terms of your entire executions process. But yeah, after getting done of your executions in a very meaningful or the successful way, you will get to see very nice informations that helps you to identify the genes that can involve in your biological process, that helps you to understand how the genes are regulated, and definitely the transcriptomics, it is a continually evolving field of your life science that revolutionize our understandings in the biology and medicines, and that helps us to discover the new biomarker, even developing the new drugs. Okay. So now, following your genomics and the transcriptomics, the journey leads us to understand the proteomics parts.
So as we know, the proteomics, it is an overarching field of dedicated science that deals with the large scale of study of the protein. And as we know, the protein are the workhorses of the all cells and playing a crucial role that that means roles in the virtually all the biological processes. But how to get the proteomics data? That is very costly. But yeah, we can apply those proteomics studies or the research to get the more meaningful information about the protein at a very particular set of state or the disease conditions that really helps us to decipher some meaningful information for the organism's functions at its molecular level. So although there are the two principal techniques I have mentioned here, that is your mass spectrometry and the protein separations technique, but apart from that there are 2D gel electrophoresis is there, affinity binding chromatography is there to get to know more about the proteins or proteomics things. And the applications we may decipher here that just getting the informations of the proteomics entire set of protein of an organism, we really can understand the functions and the interactions, and even we can go for the new biomarker that is very specific for the drug discovery. Another in the omics area, another is very booming area is the metabolomics. And that's also, it is nothing but the small subset of your entire metabolomes that's particularly play in your human body at specific time. That's also comes under the principle or techniques of the mass spectrometry and the NMR studies. So I am going further a very straightforward manner that although we have explained these omics, that very key types of the omics in the biomedical science, but how genetically similar we are. That means these omics are pretty related with the entire genetical term. So here we can see from this particular picture that only the 2% of the human genomes are there that makes us different. Okay, but how that differences can lead to or challenge gives us the more efficient challenge for any kind of the disease or maybe some kind of drug discovery applications. As we know that from the human species, we hardly differ from the 0.1%. So 99% similarity between us, but we always used to do the preclinical trial in the mouse system. So they are pretty similar with up to 85%. So with chimpanzee 96%, 60% similarity with the fruit fly. So why I am saying so, that why this genetically similar, how we are genetically similar? Because all the disease things are comes from these genetical aberrations or the modifications or the particular mutations are occurring inside our genetic makeup. So entire genome, if our genome story, if we see from our parents, the mother or father, our genomes are mixed, and that dictates the heights, eye color, disease, and many more things. And these are nothing but this is just one instructions that makes us unique, and the DNA is nothing, or the genome is nothing but the universal language of our heredity, like the ATGC. And this ATGC, we are still learning what is the ATGC combinations, and that combinations really impacted into our daily life. How we are getting, that means stress, how we can overcome the stress, how we are interacting with the environment, how basically we can really have to do some good or very hard exercise or not. So all things can be just impacted through our genomic status or the genetic makeup. So we are learning every day the new insight about the new informations about our genome. It is not a dynamic, it is not
just one thing, it has already been resolved. It is a ever going process or in a dynamic way that we need to know more and more about our genome, so that that understanding can lead us to the potential, that means can revolutionize the potential to make a good predictions towards the disease diagnosis, disease prognosis, and the particularly shape up our strategy to cure the disease. So as I mentioned, that our genome is nothing just a fancy word or that we all having in terms of our DNA. So standard sequencing, I will skip it for the sake because there is the times constraint, but still I will just give one very brief idea. That is the, as we know, the PCR, it is simple as like the PCR, but instead in the PCR we usually use the DNTPs, but in the standard sequencing there is the DDNTPs, because there is the dideoxy. DDNTP stands for the dideoxy, and just because of the presence of the DDNTPs, it really can go ahead with the sequence, that means the synthesis process. It gets the terminated at between your synthesis. And that's the way, using the capillary gel electrophoresis, utilizing the fluorescence detection technique, we get to know what are the order of the sequences, and that gives us the particular order or the nucleotides in our targeted gene. And another experiment in the omics era, very crucial and very, although it is nowadays getting that means in the behind, as because the sequencing era is now come in our particular passage. So although it is being utilized in many aspects, like the gene microarray can give you the particular informations about the differentiations of the normal cells and the cancer cells. So here we can see the flow diagram altogether same. The using the differences in the different fluorescence probe that can give you to the shape of your hybridizations in the different color. So here we can see the normal cell and the cancer cell we are cultured and going to isolate. It may be in the different conditions. Okay, your cancer cells can be treated with the certain concentrations of your drug, and then you are going for the hybridization process that we called in a chip. We can really invite the more than thousands of genes in a particular microarray chip that can give us information or the idea that how our particular genes are getting expressed in a set of conditions we have applied during our study hypothesis. So here we can see that your gray color or the black color is no significant, yellow is no significant. Why that is so? Because it is a mixture of the both cell and no presence of in the cell. That means the significant level of expressions not been observed in the hybridization assay. But in case of your green and the red, they are in the disease cell or even in the normal cell. Another booming era or the booming aspect in the biology nowadays, that is the single cell sequencing. What it does, instead of our the heterogeneous data or the heterogeneous environment or the sample, we can really pinpoint the homogeneous populations of the cell. That means if one person is having the specific disease like the cancer, and this say suppose your colon cancer or pancreatic cancer. So from that particular tissue type, we just extract one single cell and get to know through the sequencing methodology that what the gene expressions are there in the particular sequencing in terms of your single cell expressions. So now altogether the omics, how it's really impacted in the drug discovery. So
the upper parts, all the omics, one is the cytomix here, you can see the new term. It is nothing but the same as like the single cell omics, okay. So this all omics data can be transformed to through the sequencings or maybe some other aspect of your experiment. Through the bioinformatics analysis, we can really just dig into some particular target selection process. And as you know from the pharmaceutical people, pharmaceutical industry things, they are pretty cool to go through some conventional way to get a new drug discovery process, and finally you can go for the clinical trial or even before the preclinical test. So as a whole, the whole omics in the drug discovery can identify, help to identify the drug targets, can gives us understanding about the disease mechanism, can gives us the predictions about the drug efficacy and toxicity, and there are particular successful case studies that has been already in our state in by the name of the imatinib. That we call this drug, it is called the magic bullet. There is a story. It is usually used for the CML treatment, chronic myeloid leukemia. So it is nothing but the just the ABL BCR mutations, or as we can see, there is the two chromosomes. Both are normal, that is the chromosome 9 and chromosome 22, but due to the translocations of the particular genes ABL and the BCR, they gives us one particular shape of one chromosome, that chromosome changed to give this particular shapes, and this shape when your gene are holding or containing this kind of shape, so it leads to one disease conditions, okay, that is that we call the CML and the Philadelphia chromosomes. So these are nothing but from this one chromosome breaks here, that is the ABL, and from BCR that is in the chromosome position 22, that's also break. So these and these get merged and gives us the new chromosomes that is in the disease conditions, that is Philadelphia chromosome, and it started during 1990 from the Oregon State Health University. The name was, the scientist name was Ben Drake something, okay. So he started with something different, but ended up with the identifications or the discovery of the imatinib, and finally got the FDA approval even after the 10 or 12 years, around 2010 or 2001 or 2. So there are many stories like that, but how we can integrate this omic, and why to integrate this omic into the with the traditional methods. Okay, so the combining this omics, all these omics data in the with the traditional discovery can gives us a fruitful outcome. So traditional discoveries heavily rely on your literature search, cell-based assay, animal model, and so on. But integrating this particular different shapes of omic data can gives you the lead towards your targeted drug development. How? It can identify the molecules or the pathways that is crucial for the disease progressions, or even it can gives you the better understanding for development of the drug that is having the fewer side effect with the greater efficacy. Even it can help you to improve the target identifications. Then the integrating again your omics things into the understanding of the disease and the drug actions. If we differ from a little bit with the traditional method, what it does in the traditional method, understanding the disease mechanism, open tried only into the individual genes or the proteins, that is in the isolations. But integrating or combining this holistic approach of the omics
that can help us to give a bigger picture or the comprehensive picture that can say all about your gene-gene interactions, protein-protein interactions, or even the drug-gene interactions. So that can help you to identify the better effective novel drug target, and that is really helpful for the identifications of the new or the novel potential biomarker. And finally, you get to know that if that biomarker is really helpful for the disease diagnosis, or that means the early onset of the disease you can really detect at that very early level, and so that you can get to particularly save your patient stratifications. And another is the very challenge. I will say that it is challenging, but it is nowadays, it is in the ever increasing era, like the personalized medicines or the pharmacogenomics. Because the traditional method tells us that one principles that one size fits all, but that particular principles neglects the individual differences. So now the omics integration can give you the tailored treatment plan. That means that you can better strategize your treatment plan for a community of people who are having the specific, say, genetic setup. That means if you know about the polymorphism and the differences with the mutations, so you can really think of that if one particular community having a specific set of polymorphisms in our gene, they are highly susceptible to get to know their disease at a very specific age. So those kind of informations we can really utilize to save a better treatment profile and to give the better treatment to our patient. And we really can intervene and in between also to get to know that whether the treatment measures are really acting in a good way or in a bad way. So omics data, as we can see, that each and every stage of our drug discovery, our omics data can be utilized. Starting from our drug target identifications, it can be helpful for the drug development and optimizations that really guide us for the lead compound and discoveries and optimizing their structures. That can help to the clinical trial, even in the pre-clinical trial, or even we can really improve the clinical trial design. That means to design a clinical trial tells you that whether our particular objective or the hypothesis really can be helpful at the very end level or not. So more efficient or targeted clinical trial we can really consider through or seeing or looking at a very exhaustive way towards our omics data. So and the other part is that one way it is the reduce the healthcare cost. So having said that all those advantages of the omics data into our drug discovery, now I will talk about very little things about the resources. So we are not able to execute each and every experiments. Like I said, we need to know the proteomics data, we need to know the genomics data. So where we can get those kind of data that is the freely accessible. So here I am highlighting or just showcasing some publicly available data. You really can just check out and just consider for your next future part of your research or next level of planning. So GWAS catalog gives you the particular trait informations about your entire transcriptomes or your gene or genomes. And the GWAS Central, that is also publicly available database from where you can get to know the genetic association study. They are really hyperlinked with the other databases also. These are the genomic resources that can utilize for the drug discovery.
Another you possibly heard about as in the pharmaceutical background ties. So I assume that the pharmacology is very known and popular to you all. So beside this, there is the NCBI database that is called the DB-GAP. It is nothing but the database of the genotype and phenotype that can help you to save and analyze the data of the VCFs or the BAM or the short read archives in that format. So what are the applications of those databases in terms of your drug discovery? So we can utilize the GWAS catalog for mining the disease, narrow down or prioritizing the candidate loci, and we can really dig into some basic understanding about the disease mechanism. And the GWAS centrals really tells us about the SNP drug response. And the DG gap, that's as I mentioned, it is nothing but the genotype or the phenotype variations you can get that information. And the pharmacology, it can gives you a whole lot of information about the interactions like the gene, drug SNP, gene disease, and so on, even the drug. So apart from the genomics, there are the transcriptomic resources I am just showcasing here again. One is very common is the GEO database that we call the Gene Expression Omnibus that we can really utilize for that means just after downloading the entire set of treated data set or even the disease data set, we can really get to know what are the expressions level into different set of conditions, and we can therefore see the what will be the approach next onward, that we can really rely on this expressions data for getting into further towards the drug discovery process or not. Another is the expressions atlas. That's also it is actually maintained by the EBI and good informations for many different species. It is not only for your human, but you can say the lot of other species you can get that expressions levels of data. It is in terms of your transcriptomics. And the most important part is the cancer. There is one specific database that is called the TCGA, the Cancer Genome Atlas. It holds around the more than 10,000 samples. It is not only containing your disease data, but also containing the normal data, and it helps you to get your set of information, that means the hypothesized informations, and you can really rule out about your normal and as well as the disease data that has been deposited by the other researchers. And another is the very renowned and popularly popular in terms of your transcriptomic, that is the library of integrated network-based cellular signatures, and they have a meaningful set of your apps that can really interactive during our set of different executions. That gives us the very specific cell types of our gene expression study. That means we have the 100 set of cancers, that means more than 30 numbers of the cancers so far been diagnosed. So all those cancer cells can be studied through different sets of your data, like that whether the small molecule can have some impact into that particular cell line, or even your breast cancer. That means a single compound can be judged or can be assessed for the different cancer cell line. That is the motto of the interactive platforms of the link that can be utilized in terms of our transcriptomic resources for the drug discovery. Another is the GTX portals, and likewise so on, biostudies are there, and now the proteomics. So all are the publicly available and the free. You can really use those informations for your own set of studies. And PRIDE is there, Proteomics DB is there. That usually holds some
MS-based proteomics data across your various tissue type, and that can tells you some protein-protein interactions informations as well. Another very popular, the first human protein atlas, like the human genome, was already finished. So a human protein atlas is there, human proteome map is there, that you can utilize for different set of the proteome analysis. And the final is the metabolomics resources for the drug discovery. So HMDB, I know pretty sure that you all heard about that part, but gold metabolomics dataset is also in nowadays in use for the metabolomics studies. And the mesh bank is there, and another again from the UBI side, that is the metabolites. That is also an open access database for metabolomics studies. And another, the pathway-based resources that can be utilized for discovery of the new disease discovery, actually, KEGG and the BioSys and the reactome and the pathway commands. But although I have said many of things in favor of our omics data, but there is also the challenge in the genomes to drugomics approach. So what is the key challenges we can really think of? The biggest challenge lies in the right approach. That means there is a saying, when we are doing with the predictive science, there is a saying that if you give some input as in terms of the garbage, so you will get the output also in the garbage. So garbage in the garbage out. So in that particular context, if your data complexity is there, if you are not doing the right approach or adopting the right approach to standardize your study design, you will really not be convinced to get the desired outcome from your data sets. Although you are incorporating all of your entire omics data that is required for your set of executions, but due to the complexity of the data, due to wrong choice of your standardizations, it can give you the whole mess. So another is the integrations with the existing workflow. So that is also another challenge. That means although we have the different set of pipeline, but as the field is ever increasing, then it is really difficult. That means a platform has generated some specific output file that is in the specific format, but that specific format cannot be integrated in a platform independent manner. So that is the challenge in terms of your establishment of drug discovery pipelines in context with the omics field. And the other very biggest challenge is the data management. So now we are in the era of the big data. So you can imagine, not in the Sanger sequencing, but in the next generation sequencing, one particular data size can extend up to 20 GB or 30 GB. So size of the data really very matters. So that vast amount of the data cannot be easily handled by our computational infrastructure. So we have to have a very dedicated infrastructure to deal with those kind of data to get, that means to ultimately get a meaningful information out of that particular management style. And foremost important part is the ethical considerations. So if you are starting with the very experimental stage, then first restrictions or the constraint is the ethical. So whether that ethical considerations is rightly in place for in terms of our privacy, discriminations, and access to healthcare. So omics, that means we have a mindset that we can do this kind of study objective, we can implement. But due to the regulatory frameworks, ethical considerations, we really can't go ahead as per our hypothesis. And finally, when we are talking about the drugs or the candidate molecules identifications, novel drugs or pharmaceutical industry perspective, so validations of the target is one very major challenge in terms of our, that means we started and ended up with our
genomes to the drugs, but whether that validations in the animal model really it will be work in a very good way, that we really don't know. So although there is the filtrations process or the exhaustive careful considerations in the process, but ultimately there will be a failure chance as well. And the final is the cost. Cost is no way we can really ignore, because the omics is a very, that means ever increasing strategy in terms of our latest and greatest technologies. Nowadays we are just employing, but at the same time they have the cost issues. So that makes us difficult for considering those kind of omics into our academic institutions to participate in that particular set of studies. So now I will just introduce from where I belong. So the Silico Scientia Private Limited, that now presently dealing with this specific field, that we really just so far the explained topics or the explained key major features, chemoinformatics, bioinformatics, that all we are dealing, and the majorly the statistical analysis with the help of the AI ML machine learning. Nowadays we start another term is coming, that is the AIDD. We studied the SBDD, LBDD, CADD. Now the term transforming towards the AIDD. So now we are dealing with those part. We are extending our horizon in different directions. So there is the another opportunities in the Silico Scientia in terms of workshops and the internship. So that in particular internship can give you a meaningful project to deal with in a real world biological challenges that can give you some real sense or real flavor to any intern. And also final stage they can get some potential benefit in terms of their publications. And obviously there is another chance of the meeting the new people from our group. And so what is the major services and the solutions here from the Silico Scientia, that we are creating and also reproducing and facilitating with the problem-based solutions in the field of chemoinformatics, bioinformatics, and the AI/ML informatics. We are helping the people around all over the globe in terms of their scientific and the research articles writings, and helping in the publications in a good peer-review impactful journal. And also we are doing some because of nowadays in the private universities, even in the government universities, due to some lack of time, as because in the pressures in the administrative parts and the management, so we really get the very less time to cheer up with our zeal of science, doing science. So in that context, we are helping to redesign the research study and just making ourselves free as in consultations, that we can really help you out to redefine your questions that can formulate one research study design. So, and also apart from that, we are creating our own platform like for the automations of the entire chemoinformatics or the bioinformatics. So that's all. Thank you. So I will encourage if there is any questions from your end, so you can ask. Thank you. Thank you. Thank you. कोई questions? है क्या? Questions? Sir, leave मत करना. Sir, leave मत करना. Thank you so much, sir, for your informative session on challenges to genomes to drugomics. Thank you, sir, for spending your valuable time with us. And on behalf of KC Bajaj College of Pharmacy and Research, we would like to appreciate you with a token of love. This is your token of love, sir. Thank you.
And this will be receiving shortly on your address, sir. Thank you so much, sir. Thank you to you all. I wish you a very fruitful and experiencing outcome for this faculty development program. Okay. Thank you, sir. Okay, I think then we can wrap up. Is there anything else? No, sir. Okay, thank you. Thank you, Wish you sir. all the best. Okay, bye-bye. Thank you to all so much. And tomorrow we will be having the next session at 10 o'clock. Thank you.